Once again, and I think just in a few minutes we'll be having our chief guest here in the hall. May we all rise and clap. The wait is finally over, and it is our proud privilege to have the pilot of our vision and mission, Shri Manish Sisodia ji, Deputy CM Education Minister. So thank you so much for being here today. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे हम सब। सभी अतिथियों का एक निवेदन है कि वो दीप प्रज्वलन में भागीदार बने। हमारी संस्कृति में जिसकी भावना ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी सर्व कल्याणकारी भावना से लैस इस संस्कृति में दीप प्रज्वलन का कार्य किसी भी काम की शुरुआत में किया जाता है। तो हमारे समस्त अतिथिगण दीप प्रज्वलन में भागीदार बने और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, ये ऐसी अपेक्षा और निवेदन है। ये जो जगमगाते दीप हैं ये सत्य और ज्ञान की रोशनी के प्रतीक हैं और हमारी उन इच्छाओं का भी जिनमें कहा गया है अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस भावना के साथ ये दीप प्रज्वलन हुआ। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए स्वागत वक्तव्य हेतु मैं दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के उप कुलपति आदरणीय श्री धनंजय जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और दो शब्द कहें। धन्यवाद आलोक। सुप्रभात, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। Delhi Teacher University welcome you all in this national conference entitled NEP 2020 Connecting the Dots. This is our first conference after the inception of this university. The university has conceptualized in this year only, 2022, in March. We welcome our guiding pillar and source of inspiration and motivation of this conference, our Honorable Deputy CM of Delhi, Shri Manish Sisodia ji, for sparing his valuable time. He is a visionary leader and a pedagogue from core of the heart, shaping the education of Delhi in the landscape of Delhi to international level. He is living with the dream of Kothari Commission 1964-66, which categorically said, the nation is being shaped in our classroom. His keen interest for shaping this university is the guiding path for all of us. सर, हम आपके आभारी हैं कि इस नवांकुर विश्वविद्यालय जो कि अभी 5 महीने पहले ही पुष्पित और पल्लवित हुआ है, उसमें आपने अपना एक भागीरथ प्रयास किया और आप हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं और इसलिए भी आपका आभारी हूं कि आप इतने अति व्यस्त कार्यक्रम में कल हिमाचल से आप आए और उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया। मैं सिर्फ यह पंक्तियां आपको अपने दिल से और दिल के उद्गार के तरह व्यक्त करना चाहता हूं कि कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह नए बनाते हैं, जो पद चिन्ह नए बनाते हैं वो जग में जाने जाते हैं। आप जिस तरह की इबारत लिख रहे हैं, ये इबारत पूरे विश्व तक और पूरे फलक तक जा रही है। द DTU is basically, friends, is a very unique university established by an act of NCT of Delhi. It's basically to visualize and it's a dream of a quality teachers through quality education. The university is basically envisioned to evolve as a center for excellence in teacher education at both pre-service and in-service stages across the school levels and the areas of education, studies, leadership and policy. And it will work towards bridging the gap between practice, research and policy. This is the background of this university. We are working for and will strive for basically for this for as a catalyst of change in the education of Delhi. The new vision of this school education system in Delhi, which our NEP 2020 also says about that recognition of a teacher in this millennium is very, very important. And we need teachers in this century, not only skilled professional, but humane teachers who constantly engage in generating innovative practices of teaching and learning methods. Students across schools need strong academic foundations, cultural and global competencies, strong social emotional competencies. After COVID, it is very important, ability to collaborate, communicate and solve problems. The IQ and EQ
the buzzword, and now not IQ, EQ, the spiritual quotient, SQ is very important. And we believe that DTU aims to prepare all aspiring teachers to efficient enough to inculcate these abilities in each and every school system they meet future. For this more, the theoretical knowledge, the Delhi Teachers University having a main focus on developing field experience of students and to help them in original settings of government school education programs. At DTU, we'll have integration of the professional teacher education and liberal education. As being set up in the era of digital learning, university will also focus on developing online teaching skills in aspiring teachers through its programs. So this is the just brief background of this university. Now coming to this conference, before this, I will also welcome our the guest of honor, or who is the keynote speaker, Professor Anurag Beherji, who is the CEO of Azim Premji University, who is with us through the online mode. He is a member of a committee of NEP 2020. He is a founding Vice Chancellor of Azim Premji University. He is very closely associated with APF's philanthropic initiative. He has also worked with Kasturi Ranganji, who is the chairman of this policy, and as you know that he is a very good writer and a journalist, and he is a very, I believe that a pedagogue also. And I thank for him for accepting our request to deliver the keynote address. For his words of wisdom will really be an insight for us. And I'll also take this opportunity to welcome for all his endeavors for education for in this new millennium. The conference, friends, basically serves as an attempt to meet the objective of Delhi Teacher University enshrined in this act of DTU. The objective is basically to inculcate a culture of dialogue in education in Delhi by hosting sustained forums that being together different constituents of education, which is functioning as an interface between schools, teachers and higher education. So we need to collaborate all the three aspects of education, and this university is basically proposing this to have a dialogue here. For that particular reason, we have planned this and conceptualized and hosting this national conference in our campus on NEP 2020, connecting the dots. Where are the dots which are missing? Where are the threads which we have to taken care? Basically, we would like to stimulate a dialogue on the implementation of policy in India. Furthermore, it will proceed and discussing the implications of NEP 2020 on teacher education and progress towards understanding how the state education can strengthen the implication of NEP 2020 in India. The university basically attempting with this initiative to deliberate on the implication of NEP 2020 on teacher education and to discuss the strategies for implementation of policy in India. I am sure that this conference will serve as a crucial aspect of understanding the nature and nuisance of NEP 2020 in relation to the state level of teacher education. With this discussion, we also would like to include rigorously in engaging the determining the pathways for effective implementation across India, as we already have two panels. We have planned two panel discussion in this conference. The first will be implication of NEP 2020, in which the panelists are basically the teacher education and NEP 20, what lies ahead. This would be our first panel discussion after our inaugural keynote address. We welcome our first panelist and very renowned Professor Padma M. Sarangpaniji, who is here with us from across, she is working very hard, and I've been privileged to work with an NCT, National Council for Teacher Education, and various other bodies. We work together for uplifting the education. She is working in teacher education and Tata Institute of Social Sciences TISS, and working on many other programs, not only in India, our UNESCO team task force also. We welcome you, ma'am. We also welcome Dr. Greta De Souza, ma'am. Dr. Greta De Souza is an associate professor in Christ University, is head of the school. She is an expert in adolescent education. Greta equips professionals in teacher education, pre-service and service teacher education. And we welcome you, sparing your valuable time with us. Next we have Ramya Venkataraman. Ramya Venkataraman is a founder and CEO of Center for Teacher Education Center, an organization which aims to recognize teaching excellence and create career pathways for teaching professionals. Welcome, Ramya. We also welcome Ashwad Bharatsar. Ashwad currently leads the Motivating Building
cluster at Teach for India, which aims to engage and mobilize all the primary stakeholders, students, parents, educationists, TFI, alumni, and government officials. Welcome, Ashwad. The moderator of this session will be Aditya Natraj. Nevertheless, Aditya Natraj is a well-known person. He is the CEO of Paramel Foundation and the founder of direction of Kevalya Education Foundation, KEF, and he is working throughout for basically for uplifting the education in India. And the second session will be very interesting, Laws and NEP 2020, how ignite we are. In this, we have Praveen Khangta ji. Praveen ji leading the strategy office of the Convergence Foundation, an organization working on setting up new organization focus. We have our very own Shailendra Sharma ji. Shailendra ji is the principal advisor of Directorate of Education in Delhi government. He is very closely working for the Delhi education model, and he is instrumental in planning and execution all the academic and education reforms in India. The moderator will be Anurag Kundu ji. Anurag ji, though not well, but he has promised to with us. He is a chairperson of Delhi Commission for Protection of Child Rights, DCPCR, Government of Delhi. He is responsible for monitoring and implementing child rights and overall rights of rights and violations regarding to child rights. So we welcome all the panelists and all our friends from the academia, civil society, media. I again thank you for all sparing your valuable time for this conference. We have policies and programs since independence. I do narrate and do remember that in 1948 we have Radhakrishnan Commission. That's a legacy. Then we came to 1952 Modalier Commission. It came for secondary education. And then first education commission came in 1964-66, we popularly known as Kothari Commission. After this we have first policy which has been implemented by this commission 1968. Then it has been revised in 1972. Then we have come up 1986 when Rajiv Gandhi ji was the Prime Minister and Sam Pitroda was the Secretary Education. They come up with digitalization of education, and this first policy came which we can 1986. After 1986 only revision of policies we have seen. 1992 there was program of action, and there were some committees called Yashpal Committee, Learning Without Burden, and Ramamurthy Committee towards Humane Society. And first NCF came in after that 2000, and 2005 is the next NCF. In this light, this after 36 years of 1986, this policy has come up. So this policy has given a wider space of discussion, deliberations. But my question is this: we are very good in policies. Since independence, we are very nice in policies. Some critics has written, I was reading in the newspaper, that India is very good in policies, but we are lacking in implementation. We are very good in exhibition, but we are lacking in implementation. Somebody has said, तालीम का शोर इतना, तहजीब पर जोर इतना, बरकत जो नहीं होती सिर्फ नीयत की खराबी है. अगर बहुत ही शाइस्तगी के साथ, बहुत संजीदगी के साथ हम अपनी इन पॉलिसीज़ को देखें तो एक नए भारत की परिकल्पना हम कर सकते हैं. मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि हम सिर्फ पॉलिसीज़ को एग्जीबिशन में ना सजाएं, उनका क्रियान्वयन पर, उनकी परिणति पर ज़्यादा ध्यान दें. इसी मकसद के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ आए हैं. मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने इतना हमें समय दिया, और अपनी वाणी को विराम दूंगा एक बहुत ही फेमस इस कपलेट के साथ कि चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है. चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है. जो थक के बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेशली कमिंग हियर. थैंक यू अगेन. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much, Dhananjay sir, for this power-packed welcome address. And sure, now time has come when we just need not exhibit our policies, but it's time for implementation. Educationists should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial mindset, and moral leadership among students and become their role models. Education is imparted by 3 H's: the head, heart, and the hand of an individual, and can escalate the advent of a revolution in the society. Each and every one of us has been a witness to the positive change that has come about in the educational scenario in Delhi. Sir, your words never fail to inspire us to stretch our limits and to walk the extra mile. With promise, rather, we pledge that we are all going to give in what it takes to work to the best of our capabilities. With these words, I have the proud privilege to call upon a person with a mission and a vision,
none other than our Deputy Chief Minister, Education Minister, Mr. Manish Sisodia ji. Sir, may I please invite you for the welcome address. आप सभी को बहुत बहुत सुबह की नमस्कार। मंच पर उपस्थित दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के डायनेमिक वाइस चांसलर श्री धनंजय जोशी जी, रजिस्ट्रार श्री रजनीश जी, मेरे सहयोगी शिक्षा विभाग में और एडवाइज़र शैलेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एजुकेशनिस्ट्स, एजुकेशन पर दिन रात मेहनत कर रहे, सोच रहे व्यक्तित्व, और आज के इस सम्मेलन के लिए विशेषकर यहाँ पर फिजिकली पधारे सभी एक्सपर्ट्स और ऑनलाइन उपस्थित सभी एक्सपर्ट्स, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आज शामिल होने जा रहे हैं। और मुझको पूरा यकीन है कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की आज की ये कॉन्फ्रेंस हमारे सामने एक रोड मैप देगी, देश के सामने एक रोड मैप रखेगी कि जैसा कि इसका नाम है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में डॉट्स को कैसे कनेक्ट किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जैसा जोशी साहब ने कहा कि पॉलिसी बनाना सबसे प्रिय काम है, और नेताओं और अफसरों का तो सबसे प्रिय काम रहा है पॉलिसी बनाना। अब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, कितनी हो पाएगी और कितनी रह जाएगी, और अगर ये क्या करते रहे तो क्या हो जाएगा और क्या नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये सारे डॉट्स कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आज की ये कॉन्फ्रेंस इन सवालों को कहीं ना कहीं उकेर कर लाएगी। मैं ऐसा आशा बिल्कुल नहीं रखता कि आज के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से लागू होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक साथियों, सभी विशेषज्ञ, अथॉरिटीज, सबकी आपसी चर्चा से कुछ ऐसे बिंदु निकलकर आ जाएं जो देश के एजुकेटर्स और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स, एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स, इनको आसान भाषा में समझ में आ जाएं और डुएबल, मतलब बहुत प्रैक्टिकल भाषा में समझ में आ जाए, तो शायद ये कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी रहेगी, बहुत सफल रहेगी। मैं जानता हूँ कि पॉलिसी में मैं काम करता हूँ, दिन रात हम लोग पॉलिसी पे ही काम करते हैं। जिन चेयर्स पे मैं बैठता हूँ उनका काम पॉलिसी बनाना है, लेकिन डॉट्स का कनेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और डॉट्स के कनेक्ट करने ना करने की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है। हमने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई, और ये नई एजुकेशन पॉलिसी तब तक नई एजुकेशन पॉलिसी कहलाएगी जब तक एक और नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आएगी, वो चाहे 20 साल बाद आए या 25 साल बाद आए। इसके पहले जो पॉलिसी थी वो भी जब तक ये पॉलिसी नहीं आई तब तक नई एजुकेशन पॉलिसी ही थी, भले ही वो 86 में आई थी। तो अब ये कितने साल तक नई रहेगी और कितने साल तक पुरानी रहेगी, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये क्या कुछ दे के जा पाएगी? हर एक पॉलिसी अच्छी हर पॉलिसी एक अच्छा डॉक्यूमेंट होता है। जैसा अभी धनंजय जोशी जी ने कहा कि हम लोग शुरू से 1952 से आपने जिक्र किया, 48 से जिक्र किया, 48 से लेकर अब तक कितने सारे स्टेप्स उठा चुके हैं, लेकिन कहीं तो कुछ कमी रह गई है कि आज भी हमारे देश में हम साक्षरता में भी पीछे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे बात करें तो हम कहाँ हैं? मैं जो भी कहूँगा वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मान लिया जाएगा कि नेता है, दूसरे नेताओं के बारे में बोलता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि हम इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर क्वालिटी एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं। जहाँ हम एजुकेशन नहीं दे पा रहे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, जहाँ हम दे पा रहे हैं वहाँ कितने पिछड़े हुए हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। और क्यों रह गए? इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ होने के बावजूद। पॉलिसी बताती हैं कि हमारे यहाँ लोगों को समझ है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोगों को समझ नहीं रही है। जब जब हमने कुछ लिखा है पॉलिसी के रूप में, चाहे हमने NCF लिखा हो या राइट टू एजुकेशन एक्ट लिखा हो या हमने नई एजुकेशन पॉलिसी देन लिखी हो या कोठारी कमीशन में हमने जो कुछ लिखा हो, ऐसा नहीं है कि हमारे पास समझ नहीं रही, लेकिन उस समझ को मूर्त रूप देके बच्चे के जीवन में बदलाव लाना, देश के हर बच्चे के जीवन में बदलाव लाने में, एक क्वालिटी लाइफ देने में हम कामयाब नहीं रहे हैं। तो कहीं तो कुछ डिस्कनेक्ट रहा है। जैसे मैं बहुत रिसेंट एग्जांपल देखता हूं, राइट टू एजुकेशन एक्ट
कनेक्टिंग द डॉट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले हमारे अच्छे प्रयास इन अनकनेक्टेड डॉट्स की वजह से बहुत फेल हुए हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट एक बहुत अच्छी अवधारणा है। हम सब एजुकेशन में हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि फेलियर इज नॉट ए चिल्ड्रन अफेयर, इज नॉट ए चाइल्ड्स अफेयर। फेल बच्चा नहीं होता है, फेल सिस्टम होता है। इसलिए हमको बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए। सारी दुनिया ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए और अंत में निष्कर्ष निकाला कि किसी एक पर्टिकुलर एज या एप्रोप्रिएट लेवल तक हम बच्चों को फेल नहीं करेंगे, डिटेंशन नहीं करेंगे। सारी दुनिया ने जब वो करना शुरू कर दिया तो हमारे भी कुछ अच्छे लोगों को लगा यार ये अच्छा आइडिया है, 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं करना चाहिए, डिटेंशन नहीं होना चाहिए। अब किसी पॉलिसी मेकर को भी अच्छा लगा, उसने उठा के पॉलिसी बनाई, किसी ने कानून बना दिया और देश में कानून बन गया। लेकिन कानून बनाने या पॉलिसी बनाने भर से अच्छा हो गया होता तो इस देश में नो डिटेंशन एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग होता। लेकिन इसके कुछ वर्ष बाद आवाज उठने लगी कि साहब ये नो डिटेंशन से तो और गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि हमने नो डिटेंशन पॉलिसी या राइट टू एजुकेशन के इस बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के कनेक्टिंग द डॉट्स पे ध्यान नहीं दिया। हमें अपना सिलेबस में काम करना चाहिए था, हमें अपने टीचर्स ट्रेनिंग पे बदलाव करने चाहिए थे, हमें बच्चों के अगले क्लास में प्रमोशन के तौर तरीकों पे बदलाव करना चाहिए था, हमें यह समझना चाहिए था कि प्रमोशन और फेल और नॉन फेल में या पास में कुछ अंतर है कि नहीं है। हमने बिना इन सब डॉट्स को कनेक्ट किए हुए राइट टू एजुकेशन लागू कर दिया और राइट टू एजुकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिया जिसको हमने कहा नो डिटेंशन पॉलिसी। और 3-4 साल के अंदर अंदर 9वीं 10वीं में ऐसे बच्चों की भीड़ बढ़ती चली गई जिनको अपना लिखना तक नहीं आता था। अपना नाम भी लिख लेते थे तो बहुत बड़ी बात थी। 2015-16 में मैं खुद स्कूलों में जाके ऐसे बच्चों से मिला जिनकी सेंस बहुत ज़बरदस्त है, मानसिक विकास बहुत ज़बरदस्त है। बोर्ड पर लिखे हुए अंग्रेजी के शब्दों को, पूरे के पूरे पैराग्राफ को मैंने देखा क्लासरूम्स में खड़े होके कि बच्चों ने टीचर से सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पर अंग्रेजी के वाक्य लिखे हुए हैं। लेकिन उन बच्चों को जब मैंने पूछा कि ये क्या लिखा है आपने, तो पूरा सेंटेंस तो छोड़ दीजिए, THE दा समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, काफी समय बिताया ऐसे क्लासरूम्स में कि ऐसा क्या मतलब आपने लिख क्यों लिया ये? आपने इतनी बढ़िया अंग्रेजी में, इतनी बढ़िया हैंडराइटिंग में पूरा का पूरा बोर्ड से कॉपी किया हुआ है, आपको दा पढ़ना नहीं आता है? उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, उसके लाइंस बहुत शानदार थी, उसको लाइन बाय लाइन कॉपी करना आता है लेकिन पढ़ना नहीं आता। और ये 9th 10th की बात थी। तो ये क्योंकि हमें लगा कि बस कानून बनाने भर से काम हो जाएगा, नो डिटेंशन का हमने कानून बना दिया। राइट टू एजुकेशन के और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम यही देखते हैं कि तैयारियां नहीं हुई और तैयारियां नहीं होने से लागू किया गया कानून डिजास्टर बन गया और अंत में देश की पार्लियामेंट को कुछ चीजों को वापस लेना पड़ा। पार्लियामेंट के एक बहुत विजनरी कदम को खुद पार्लियामेंट को वापस लेना पड़ा, सरकारों के एक विजनरी कदम को खुद सरकारों को वापस लेना पड़ा, बिना तैयारियों के, बिना डॉट्स को कनेक्ट किए हुए। यही एनसीएफ में भी हुआ। हमने लर्निंग आउटकम्स लिखने शुरू कर दिए कि साहब ये कंटेंट होगा, ये करिकुलम होगा और ये उसका लर्निंग आउटकम होगा। लेकिन वो लर्निंग आउटकम आएगा कैसे? आपके डॉट्स तो कनेक्ट नहीं हुए। वहां परीक्षा प्रणाली वैसी चल रही थी। हमने कहा कि साहब बच्चे को हिंदी की फलानी कहानी के बाद उसके अंदर ये सेंस डेवलप होना चाहिए, अंग्रेजी की फलां कहानी के बाद या हिस्ट्री पढ़ने के बाद या ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ये सेंस डेवलप होना चाहिए। लेकिन मिसिंग पॉइंट्स ये थे कि हमें उसकी परीक्षाएं लेनी नहीं आती। 2005 के बाद से, बाकी सबका समय छोड़ दीजिए, मैं पूरे इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, 2005 के बाद से सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स द्वारा एनसीएफ के बनाए गए पाठ्यक्रमों के बाद बनाए गए क्वेश्चन पेपर्स को उठा के आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीएफ कुछ बात कर रहा है और परीक्षा लेने वाला जो पेपर सेटर है वो कुछ पूछना चाह रहा है। एकदम 180 डिग्री का सीधा अंतर है। एनसीएफ आपको एक डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, उसका इंटेंट अच्छा है, लेकिन परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं है कि एनसीएफ में जो लर्निंग आउटकम रखा हुआ है उसके बारे में मैं पूछूं तो क्या पूछूं। अगर मुझे बच्चे का वो जज करना है, वो इवेल्युएट करना है तो कैसे करूं? वो डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए। और सारे एनसीएफ के लर्निंग आउटकम्स, आज हम कितने 17 साल हो गए, 17 साल बाद भी हम लर्निंग आउटकम्स के एल तक नहीं पहुंचे हैं।
पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमेशा यही हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कनेक्टिंग द डॉट्स, इस पॉलिसी के अगर हमने काम नहीं किया तो हम इस पॉलिसी को भी बहुत बुरी तरह से फेल करेंगे। एक देश के रूप में हम फिर पछताएंगे 20 साल बाद कि अब फिर नई पॉलिसी की जरूरत है, और 10 साल बाद हो सकता है जब भी कोई नई पॉलिसी बनेगी। कनेक्टिंग द डॉट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैं यहां नहीं उठा रहा हूं, मैंने हर फोरम पे उठाए हैं। जैसे बहुत सिंपल है, मैं इसके भी कुछ क्वेश्चन आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। पूरे देश में लीगल फ्रेमवर्क से एजुकेशन चलती है, और पूरे देश में पहली क्लास में एडमिशन की एज अलग अलग है। अब हमारा एजुकेशन पॉलिसी एक पर्टिकुलर एज की बात करती है। कितने की बात करती है एजुकेशन पॉलिसी? एंट्रेंस लेवल पे 6 साल में। अब किसी राज्य में 7 साल में है। राइट टू एजुकेशन कुछ कहता है, एजुकेशन पहली क्लास की एज क्या होगी, राज्यों के कानून अलग कहते हैं। अब कंट्राडिक्शन है। अब पॉलिसी तो पॉलिसी है, पॉलिसी से आगे का कानून है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने कानून मानेगी जो पार्लियामेंट और विधानसभाओं ने पास किए हैं, या एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करेगी? आप लीगली पचड़े में फंस जाएंगे। कल को कोई जाके कोर्ट में खड़ा हो गया और क्वेश्चन कर दिया कि ये शिक्षा मंत्री या शिक्षा निदेशक या इस प्रिंसिपल ने गलत कर दिया, इसने राज्य के कानून का उल्लंघन किया, बेचारा फंस जाएगा। फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि जी नई एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है। नई एजुकेशन पॉलिसी किसी कानून से बड़ी नहीं है। देश का सिस्टम, अधिकारियों की कलम, विधानसभाओं और संसद द्वारा पास कानून से चलते हैं, किसी पॉलिसी में लिखने भर से नहीं चलते हैं। यह हमें ठीक करना पड़ेगा। ये एक मिसिंग डॉट है इसका। पॉलिसी में लिख दिया कि भाई 9वीं से 12वीं तक का एक बैंड की एक सैंक्टिटी है, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की। अब पूरे देश में देख लीजिए आप, अगर हमने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 9वीं से 12वीं तक को जहां आपने एक बैंड माना है, उस बैंड को कौन टीचर पढ़ाएगा? पीजीटी पढ़ाएंगे कि टीजीटी पढ़ाएंगे? या ऐसा ही सिस्टम चलेगा कि 9वीं और 10वीं को टीजीटी पढ़ाएंगे और 11वीं और 12वीं को पीजीटी पढ़ाएंगे? अगर 9वीं और 10वीं को टीजीटी पढ़ाएंगे और 11वीं और 12वीं को पीजीटी पढ़ाएंगे, तो फिर ये अलग से बैंड किस चीज का हुआ? आप इसको कैसे अलग एक एप्रोप्रिएट लेवल मान रहे हो? बड़ा सवाल है। क्या इसमें चेंज होने की जरूरत नहीं है? क्या कानूनों में चेंज किए बिना या एग्जिस्टिंग रूल्स में चेंज किए बिना, जो अलग अलग राज्य फॉलो कर रहे हैं अपने अपने स्कूलों में, कहीं इसको लेक्चरर बोलते हैं, अलग अलग शब्द यूज करते हैं, फंस जाएगा मसला। अब 9वीं से 12वीं के बच्चे को किससे पढ़वाया जाएगा? अगर नई एजुकेशन पॉलिसी को मैं आज लागू करना चाहूं तो मैं 9वीं के बच्चे को, 9वीं क्लास में आए हुए बच्चे को अलग बैंड मानते हुए टीजीटी से पढ़वाऊं तो 9वीं 10वीं में वो पढ़ाएगा, 11वीं 12वीं में कोई और पढ़ा रहा होगा उसको, किसी और क्वालिफिकेशन का। आपने 9वीं से 12वीं की क्वालिफिकेशन क्या होंगी टीचर की पढ़ाने की, उसके रिक्रूटमेंट रूल्स क्या होंगे, इस पे काम नहीं किया। और ये मिसिंग डॉट्स हैं जो आपके कभी भी 9वीं से 12वीं के बैंड को ठीक नहीं होने देंगी। फिर एक बच्चा निकल के आ रहा है नर्सरी से, वसंत कुंज, वसंत वैली, डीपीएस जैसे स्कूलों के नर्सरी केजी 1 2 3 करते आ रहा है। एक बच्चा आंगनवाड़ी से निकल के आ रहा है, तो आंगनवाड़ी और नर्सरी में इतना बड़ा गैप होगा। फिर आप अर्ली चाइल्डहुड केयर को, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को पहली बार एक पॉलिसी लेवल पर एक इंटरवेंशन दी गई है। लेकिन क्या आंगनवाड़ी में बैठना सीखना और खाना खाना सीखना ही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मान ली जाए वहां पे? और अगर नहीं तो उसके गैप को कैसे अंतर किया जाए, खत्म किया जाए इस अंतर को? ये बड़े सवाल हैं जो एनईपी में जवाब दिए जाने और उसमें चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। अगर हमने नहीं लाए तो मुझे लगता है कि हम इस नई एजुकेशन पॉलिसी को ढोल ही बजाते रहेंगे, और पॉलिसीज़ ढोल बजाने का शिकार होती रही हैं और ये भी होती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज बहुत सार्थक चर्चा के बीच, क्योंकि यहाँ दोनों तरीके के एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं, जो एजुकेशन को ओवरऑल एक क्रिटिकल नज़रिए से देखते हैं और जो एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन की पॉलिसीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और एजुकेशन की किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। दोनों तरह के लोग बैठे हैं, जो बच्चे के मस्तिष्क के साथ काम कर रहे हैं, बच्चे के स्कूल में खड़े होकर, क्लासरूम में खड़े होकर काम कर रहे हैं, वो लोग भी हैं यहाँ पर, और वो लोग भी हैं जो उस पाठ्यक्रम को बनाने की प्रक्रिया, डिलीवर होने की प्रक्रिया, रिजल्ट और इन सब का एनालिसिस करने वाले लोग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर बहुत सार्थक चर्चा आप लोग करके मेरे जैसे व्यक्ति के लिए और देश के उन तमाम लोगों के लिए जिनको इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में अहम भूमिका निभानी है, उनके लिए कुछ सार्थक पॉइंट्स आप लोग देंगे।
मैं टीचर्स यूनिवर्सिटी को, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को फिर से बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इसकी शुरुआत की है, इस चर्चा की शुरुआत की है कि देयर आर सर्टेन डॉट्स टू बी कनेक्टेड। टीचर्स यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के पहले, क्योंकि मेरे ही कार्यकाल में इसका स्थापना हुई है, मेरा और मुख्यमंत्री जी का विज़न, सरकार का विज़न भी यही है कि हम दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को बीएड की डिग्री देने वाली फैक्ट्री के रूप में नहीं देखते, बल्कि हम ये देखते हैं कि टीचर्स से जुड़े हुए हर मसले का 360 डिग्री, टीचर ट्रेनिंग से लेके, टीचर की तैयारी से लेके, पढ़ाए जाने के तौर तरीक़ों से लेके, परीक्षा लिए जाने के तौर तरीक़ों से लेके, पॉलिसीज़ से लेकर, इन सब पे भी इसमें चर्चा होनी चाहिए। और जब आप डिग्री दें बच्चों को, डिप्लोमा दें, तो मुझे लगता है कि मैं किसी अहंकार में नहीं हूँ, आत्मश्लाघा में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि शायद जितना प्रिविलेज आपके पास है टीचर्स यूनिवर्सिटी के रूप में, देश की शायद ही किसी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को यह प्राप्त होगा कि पूरा का पूरा स्कूल सिस्टम, जिसमें लगभग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के देखें तो 44 लाख बच्चे हैं। एक छोटे से दायरे में, दिल्ली जैसे छोटे से दायरे में 44 लाख बच्चे आपके ट्रेनिंग टीचर्स के लिए प्रयोगशाला के रूप में, प्रयोग करने के रूप में, उनको सीखने समझने के रूप में उपलब्ध हैं। ये कहीं उपलब्ध नहीं है। हर एक, मैं पिछले 7-8 साल से देख रहा हूँ, सारे एक्सपर्ट्स आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद उन पढ़ाइयों को करके आए हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जब टीचर ट्रेनिंग दे रही होती है तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रैक्टिकल का। उसको सरकारों के सामने, उसको प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशंस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भाई हमारे ट्रेनिंग टीचर्स हैं, आप उनको जगह दे दीजिए थोड़ी सी, हम अपनी उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा सिस्टम, दिल्ली सरकार का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट इस टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी का पार्टनर है, उसका सहकर्मी है एक तरह से। इतने लाखों बच्चे हजारों स्कूलों में, करीब 1 लाख से ज़्यादा क्लासरूम्स में आपके लिए उपलब्ध हैं। आप जैसे प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे समझ बनाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स की, वैसे बनाने के लिए आपको जितने संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं शायद ही किसी के पास में उपलब्ध होंगे। ये आपके लिए एक बड़ी बात है। और जैसा मैंने इस यूनिवर्सिटी के ओपनिंग के समय पे कहा था कि मेरी अपेक्षा, सरकार की अपेक्षा इस यूनिवर्सिटी से केवल बीएड की डिग्रियां दिलाने का काम फैक्ट्री रूप में करना नहीं है, बल्कि टीचर के काम को एक गौरवान्वित काम बनाना, एक सॉट आफ्टर कैरियर के रूप में स्थापित करना भी उतना ही बड़ा काम है इस यूनिवर्सिटी के हिस्से में। जैसे हम देश के और बहुत सारे कैरियर्स को देखते हैं, आईएएस को देखते हैं, आईपीएस को देखते हैं, फौज को देखते हैं, इवन स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखते हैं, नर्सेज को देखते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे अभी ड्रीम कैरियर के रूप में देखते हैं और उनको कहा जाता है। मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन ज़रूरी है, टीचर यूनिवर्सिटी में जब मैं आता हूं तो मुझे लगता है इस बात को मैं बार बार दोहराता रहूं कि जब वो आते हैं 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे, तो हम किसी हिस्ट्री के टॉपर से या किसी इंग्लिश के टॉपर से उसके माता पिता को या उसके टीचर्स को ये कहते बहुत बार सुनते हैं कि बेटे आपकी अंग्रेज़ी बहुत शानदार है, आपका लिखना बहुत शानदार है, आपकी हिस्ट्री बहुत शानदार है, आप आईएएस की तैयारी करो। सुनते हैं ना? किसी का मैथमेटिक्स बहुत शानदार हो, किसी का साइंस बहुत शानदार हो, तो हम अपने बच्चों को ये सुनते हुए देखते हैं कि बच्चे आपका मैथमेटिक्स बहुत शानदार है, आपको तो आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, आपकी केमिस्ट्री, आपकी जूलॉजी, बॉटनी सब शानदार है, आपको तो फलाने डॉक्टर, नीट, इन सब की तैयारी करनी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कभी हम ये नहीं सुनते कि हिस्ट्री के टॉपर से कोई माँ बाप या कोई टीचर ये कहते हो बेटा तुम्हारा हिस्ट्री बहुत शानदार है, तुम हिस्ट्री के टीचर बनना, हिंदी बहुत शानदार है, हिंदी के टीचर बनना, तुम्हारे मैथमेटिक्स बहुत शानदार है, मैथमेटिक्स के टीचर बनना। हम कभी नहीं सुनते ये। हमारे स्कूलों में कहीं कोई एक्सेप्शन हो अलग बात है, लेकिन जनरल ना तो ये घरों में चर्चा है कि घर में माँ बाप देखें कि मेरे बच्चे की साइंस बहुत अच्छी है तो मैं उसको बोलूँ बेटा साइंस का टीचर बनना, मेरा ख्वाब है कि तुमसे, वो इंजीनियर बनाना चाहेंगे, वो साइंटिस्ट बनाना चाहेंगे, वो नासा में भेजना चाहेंगे, पर साइंस टीचर बनना ये कभी नहीं कहना चाहेंगे, कभी नहीं कहते हैं। क्यों?
परसेप्शन का खेल है, वरना टीचर का काम बहुत सम्मानित काम है। और आज की तारीख में देखें तो टीचर्स की सैलरी भी पे कमीशन के हिसाब से एक अच्छी सैलरीज में गिनी जाती हैं। उसके बावजूद घरों में ये चर्चा नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ टीचर्स यूनिवर्सिटी का काम ये है, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का खास तौर से, कि इस परसेप्शन को तोड़ते हुए इस मिसिंग डॉट को, ये जो डॉट है, इसको भी कनेक्ट करने के लिए काम करें। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस जब आयोजित करते हैं आप लोग, तो मुझे लगता है कि आप उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं पूरी की पूरी टीचर्स यूनिवर्सिटी को और सभी को, आप सभी को भी यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत शुक्रिया और आभार सर। आपके शब्दों ने न केवल हमें प्रेरित किया बल्कि सचेत भी किया कि आने वाले समय में हमें किस तरह से काम करना है। और आपका जो विज़न रहा है वो यही रहा है कि शिक्षा पर लगातार ज़्यादातर बातें होती रहें, तो कितना सुंदर मंजर होगा और कितनी सुंदर बातें होंगी जब गली गली और चौक चौक पर शिक्षा पर ही बातें होंगी। तो ये विज़न है जो आपका, हमें अभिप्रेरित करता है। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और की नोट एड्रेस के लिए हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं वो ऑनलाइन मोड में जुड़ेंगे, अनुराग बहर जी। और अनुराग बहर जी के नाम से हम में से कौन परिचित नहीं है। अनुराग जी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं। सशक्त और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा के हामी अनुराग जी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के प्रारंभिक उपकुलपति रहे हैं। विप्रो के सीईओ के रूप में उन्होंने कई इनोवेशंस, नवोन्मेष किए हैं। इन्होंने बहुत सी सरकारी नीतियों के निर्माण, डिज़ाइन, योजना और उसके क्रियान्वयन में काम किया है। इनके लिखे से तो हम सब परिचित हैं ही। आज आइए हम लोग इनको सुनते हैं। तो की नोट एड्रेस के लिए मैं अनुराग बहर जी को आमंत्रित करूंगा, वो ऑनलाइन मोड में हमसे जुड़ेंगे। तो इनका स्वागत करें हम सब करतल ध्वनि के साथ। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नमस्कार। पहले तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और एक तरह से ईर्ष्या हो रही है मुझे कि मेरे इतने सारे मित्र वहां सभा में बैठे हुए हैं और मैं इतनी दूर बेंगलोर में हूं। और क्षमा भी चाहता हूं, बेहतर तो यही होता कि मैं सब आप लोगों के साथ वहां होता, लेकिन कुछ कारणवश हो नहीं पाया। बधाई आप लोगों को, बधाई मनीष जी को। मनीष जी ने ये बात मुझे याद है, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले कही थी और उसको इस जीवंत रूप में देख के बहुत हर्ष होता है। तो मनीष जी, आपको बधाई, आपकी सरकार को बधाई। और उससे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल से दिल्ली के शिक्षा तंत्र को बधाई, क्योंकि आपने जो ये पहल की है दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी की, वो अनूठी पहल है। और मैं जो अगले 10-15 मिनट में जो कहने वाला हूं उसका सार यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में मेरे ख्याल से आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एक स्पीयर हेड हो सकती है। स्पीयर हेड का इस्तेमाल हम लोग शब्द का करते हैं। स्पीयर हेड मतलब जो सबसे आगे है और जो हमें जीत की तरफ ले जा सकती है। तो मेरी समझ में ये सही में स्पीयर हेड हो सकती है। तो आप सबको बधाई हो। आपके सामने रखूंगा और तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और वहां जाऊं उससे पहले मैं आपसे एक छोटे से वाकये के बारे में बात करना चाहता हूं। अभी करीब 5-6 हफ्ते पहले मैं जशपुर नगर में था। पता नहीं वहां जितने लोग हैं, जशपुर नगर कितने लोग जानते होंगे। वो छत्तीसगढ़ का एक पूर्वी जिला है और प्रीडोमिनेटली ट्राइबल इलाका है। तो जशपुर नगर से भी आगे एक उसका ब्लॉक हेडक्वार्टर है कुनकुरिया नाम का। तो मैं वहां गया। वहां से भी आगे कुछ और 20-25 किलोमीटर रोड पे गए। फिर वहां से और आगे गए। वो फिर गाड़ी वाड़ी नहीं जा सकती थी, गाड़ी स्कूटर वगैरह कुछ नहीं जा सकता था। तो करीब 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। एक पठार टाइप की जगह थी और वहां एक सरकारी स्कूल था, प्राइमरी सरकारी स्कूल था। करीब मेरे ख्याल से 31-32 बच्चों का नामांकन था और एक टीचर थे। अब अगर हम सोचे, आप सब दिल्ली में हैं, मैं बैंगलोर में हूं। इस देश में अगर आप कहीं दूर का मतलब मैं शब्द का इस्तेमाल मेटाफर के तरीके से भी कर रहा हूं,
अगर आप कहीं दूर जाना चाहते हैं तो आप वहां से कहां दूर जाएंगे? जशपुर नगर से कुनकुरी, कुनकुरी से आगे और 20-25 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर और पैदल चलिए, कहां जाएंगे आप उससे दूर? और उस जगह पर हम उस सारी चीज को देख सकते हैं जिसके अभावग्रस्त इस देश को हमने देखा है पिछले कई वर्षों में। चाहे वो हेल्थ की फैसिलिटीज हों, चाहे वो स्कूल के रिसोर्सेज हों, पंचायत कैसे फंक्शन कर रही है, जो भी आप देखना चाहें वो उसको हम अभावग्रस्त ही पाएंगे वहां पर। अब उससे दूर हम नहीं जा सकते इस देश में। और इस उद्देश्य नहीं है कि इस तरह की वाकये आप ना देखेंगे दिल्ली में भी या बैंगलोर में भी, हमारे बड़े शहरों में भी यही है अगर बाहर निकल जाएं तो। लेकिन मैं जब वहां गया तो नहीं लूंगा, टीचर ना केवल वहां मौजूद थे बल्कि दिल से पढ़ा रहे थे। अब आप सोच के देखिए, 31 करीब बच्चे हैं और वो पहली से पांचवी में थे, जैसा बहुत लोग डील करते हैं ना, पहली से पांचवी में, और एक्सपेक्टेशन यही है कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मतलब हिंदी और गणित और ईवीएस का जो भी वहां छत्तीसगढ़ में जिसका जो भी नाम देते हैं उसको पढ़ाएंगे। तो पूरे दिल से पढ़ा रहे थे। मैं करीब 2-2.5 घंटे बैठा, बच्चों से बातचीत की, और बच्चों के साक्षरता या गणित को आप देखें वहां पर तो ठीक ठाक आता है उनको। ऐसा नहीं है कोई, जैसे मनीष जी कह रहे थे कि इतने एलीट स्कूल होते हैं वहां आप जाएंगे तो फर्क माहौल होगा, लेकिन अगर आप किसी आम स्कूल में जाएंगे उस हिसाब से गणित को देखें, भाषा को देखें, उसमें बढ़िया थे बच्चे। यानी इक्का दुक्का मिल जाएगा जो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अधिकांशतः पढ़ पा रहे थे, गणित ठीक से कर पा रहे थे। उतना ही नहीं, जो उन लोगों का एक दूसरे के साथ बर्ताव था, क्योंकि हम ये नहीं कहते ना कि शिक्षा केवल भाषा और गणित के लिए है। हम तो ये चाहते हैं ना कि शिक्षा जो है वो भारत के अच्छे नागरिक बनाए, अच्छे मनुष्य बनाए। तो उसमें भी आप देख सकते थे कि किस तरह से एक दूसरे से बर्ताव कर रहे थे। हम क्यूरियोसिटी की बात करते हैं, किस तरह से उन्होंने जानने की कोशिश की कि मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं क्या चाहता हूं, बिल्कुल निडर, बिल्कुल निडर। तो अब मैंने शिक्षक से पूछा, और मैं ये आपको कह सकता हूं कि मैं करीब साल में कम से कम 130-140 दिन इसी तरह से इस तरह की जगहों में बिताता हूं। तो ये मेरे लिए कोई नया वाकया नहीं है, ये तो रिसेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा आप कितने दिन से यहाँ पोस्टेड हैं? तो वो करीब 11 साल से वहां पोस्टेड है, और रहते एक थोड़े पास के शहर में है। तो वहां से आते हैं, अपनी स्कूटर में आते हैं और उसको पार्क करते हैं और ऊपर जाते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कर रहे हैं 11 साल से। तो मैंने उनसे वही सवाल पूछा जो हर ऐसे शिक्षक से पूछता हूं मैं, कि आप ये करते क्यों हैं? आपको कोई इंस्पेक्शन के लिए बीईओ, पीआरसी वगैरह कौन आया आखिरी बार? कोई नहीं आएगा वहां पर। तो आप ये करते क्यों हैं आप ये? तो उस सवाल का जवाब तो बिल्कुल सीधा सा है, जो हर जगह मुझे वही जवाब मिलता है, हर जगह। और जवाब बिल्कुल सीधा, सिंपल, सरल, सच है कि सर ऐसा है ना, ये बच्चों का भविष्य तो मेरे हाथों में है ना। तो अगर मैं नहीं करूंगा तो सर क्या होगा इसका? इतनी तो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, ठीक है। तो अब ये वाकया मेरे साथ साल में कम से कम 50 बार होता होगा। देश के आप मतलब नागालैंड से लेके गुजरात, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यही वाकया होता है। हर बार सुन के मैं तो निस्तब्ध रह जाता हूं। मेरे में तो ये लगता नहीं है कि मैं, अगर मेरी जिंदगी ऐसी हो तो मैं ये कर पाऊंगा। और 11 साल तो वही हैं वो, उसके पहले और इसी तरह की जगह में पढ़ा रहे थे। तो इस वाकये से मैं एक खास चीज निकालना चाहता हूं। एक वो है कि इस देश में आप जहां भी जाएंगे अच्छे टीचर तो पाएंगे ही। टीचर खराब है कहना जो है ना, वो उसी तरह की बात है, वो ये कहना कि भारतीय खराब हैं, हिंदुस्तानी लोग खराब हैं। ऑफ कोर्स अगर खराबी की जो भी डेफिनेशन आप लेंगे, अच्छाई की जो भी डेफिनेशन लेंगे, कुछ प्रतिशत भारतीय, कुछ प्रतिशत हिंदुस्तानी खराब निकलेंगे उस डेफिनेशन के हिसाब से।
जो भी डेफिनेशन लेंगे उसके हिसाब से भारतीय कुछ हिंदुस्तानी बहुत बढ़िया निकलेंगे। तो अगर हम कहने लगते हैं कि टीचर खराब हैं, तो हम वही कह रहे हैं कि अगर हमारे देश में मान लीजिए 90 लाख टीचर हैं या 1 करोड़ टीचर हैं, तो वो तो हिंदुस्तानी है ना, सबके सब। उसमें कुछ खराब होंगे, कुछ अच्छे होंगे। तो ये तो मैंने कतई नहीं पाया है इस देश के किसी भी कोने में कि वहां खराब टीचर होते हैं। कुछ खराब होते हैं, अधिकांशतः ठीक ठाक हो। आप उनके साथ करते क्या हैं, आप उनको क्या एनवायरनमेंट देते हैं, उनको क्या मदद मिलती है। एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि चौक है, एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग में पानी चू रहा है कि नहीं, वो तो है। एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि उसका जो अफसर है उससे कैसे बात करता है, उसको एक ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की के सबसे नीचे पायदान के व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिसको रोज लताड़ा जाता है, या उसको देखा जाता है जो हम रोज कहते हैं कि शिक्षक ही देश बनाता है। तो ये एनवायरनमेंट है। तो मेरे ख्याल से ये मुद्दा कि टीचर कैसे हैं, इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए कि टीचर आम हिंदुस्तानी है, अच्छा भी होगा बुरा होगा, वो क्या करेगा निर्भर ये करता है कि हम क्या करेंगे। ये पहली बात थी, है ना, इस वाक्य की। लेकिन उससे एक जुड़ी हुई मेरी समझ में जो महत्वपूर्ण बात है, जो मेरी बाकी 3 बातों की उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो ये है। देखिए, ये जो टीचर थे, जो जशपुर नगर उस पठारी इलाके के टीचर थे, लगे हुए हैं 23 साल से, 11 साल से नहीं, लेकिन लगे हुए हैं 23 साल से। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। लगे हुए हैं क्योंकि वो अच्छे हैं। मैंने जैसे कहा, आप जानते हैं बहुत लोग अच्छे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, लेकिन वो लगे हुए हैं क्योंकि वो इफेक्टिव हैं। आप ये जरा सोच के देखिए, आप लोग जिन भी पदों पे हैं, जो भी काम करते हैं, आपके बड़े भारी शहर में तरह तरह के काम होते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम में इफेक्टिव नहीं होंगे तो कितने दिन तक लगे रहेंगे आप ये बहुत सिंपल सी बात है ना, लेकिन हम इसको सोचें अगर, तो ये आप जरा सोच के देखें। हम आप लोग तो बहुत लोग शिक्षक हैं, आप तो जानते हैं अच्छे से। आपको ये क्या मैं कहूं कि अगर आप रोज स्कूल जाते हैं, रोज पढ़ाने की कोशिश करते हैं, यंग आप टीचर हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक दिन सफल नहीं होते हैं, अगले दिन भी सफल नहीं होते हैं, ये सफलता में आगे भी नहीं बढ़ते हैं, कितने दिन तक वो एंगेजमेंट रहेगा? ये एक मेरे पिछले, इसको हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जो देना चाहिए। वो ये है कि आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी एंगेजमेंट, आपके मोटिवेशन को ड्राइव करती है। क्योंकि अधिकांशतः लोग ठीक ठाक और अच्छे हैं भाई। मोटिवेशन, एंगेजमेंट वगैरह जो है ना, वो इस आधार पे नहीं चलता है कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। वो इस आधार पे चलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अच्छे और ठीक ठाक हैं, वो इस आधार पे चलता है कि आप कितने इफेक्टिव हैं। क्योंकि ये एक दिन प्री सर्विस की बात नहीं है, एक दिन इस तरह के सेमिनार की बात नहीं है। उस टीचर को रोज उसी क्लास में जाना है, उन्हीं बच्चों के साथ डील करना है, फिर नए बच्चे आएंगे। अगर आप रोज जिंदगी में यही देख रहे हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं जो आपका काम है, तो आप कैसे मोटिवेटेड और एंगेज रहेंगे? तो ये जो मामला है, इस वाकये से मैं जो निकालना चाहता हूं, वो ये नहीं कि अच्छे टीचर हर जगह होते हैं, वो हमें मालूम है। वो मैं निकालना चाहता हूं इफेक्टिवनेस जो है, इफेक्टिवनेस और जो कैपेसिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है, उसका इफेक्ट डायरेक्टली मोटिवेशन और एंगेजमेंट पे होता है। यही मैंने देखा है। अच्छे ठीक ठाक टीचर सब जगह हैं, लेकिन अंततः उनका एंगेजमेंट, मोटिवेशन और ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन शिक्षा को, बच्चों को, देश को, वो इस बात पर निर्भर है कि वो कितने इफेक्टिव हैं, और इफेक्टिवनेस कैपेसिटी पर निर्भर है। तो ये बैकग्राउंड है, सिंपल सी बात। इफेक्टिवनेस जो है वो मोटिवेशन से लिंक्ड है, लेकिन मोटिवेशन एंगेजमेंट डीपली कैपेसिटी से लिंक्ड है, डीपली। हर जगह मैंने यही देखा है। और इसमें एक और मुद्दा है, वो ये है कि आप किसी भी तरह की टेस्टिंग करिए। टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन टेस्टिंग से आप मोटिवेशन और एंगेजमेंट नहीं पता कर सकते। टेस्टिंग से आप कौन व्यक्ति बहुत कमिटेड, डेडिकेटेड रहेगा नहीं पता कर सकते। बड़ी मुश्किल बात है, वो बहुत मुश्किल बात है। तो आम हिंदुस्तानी ही आके टीचर बनेगा, और वो कितना इफेक्टिव रहेगा वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पे, जो वो उसके मोटिवेशन को भी इफेक्ट करेगा। ये
इस वाकये का सार है। इस वाकये के साथ मैं पहली बात है कि शिक्षा या शिक्षक का काम, हम जानते हैं, सबसे पेचीदा ह्यूमन प्रोफेशन है, सबसे कॉम्प्लेक्स, मेडिसिन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और अगर मनीष जी नाराज ना हो तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पॉलिटिक्स से भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो वो टीचर का, देखिए मामला सिंपल सा है ना, कि हम अगर ये चाहते हैं कि हम लोगों के दिलो दिमाग को अगर हम बढ़ाएं, बदलें, तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज क्या हो सकती है। और हमारे बड़े बड़े उद्देश्य हैं कि अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा मनुष्य बनेगा, उससे स्कूल से एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, वगैरह वगैरह, तरह तरह के उद्देश्य हैं। तो किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को इस तरह से डेवलप करना कि वो सारे उद्देश्य पूरे हो सकें, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रोफेशन है, सबसे कॉम्प्लेक्स। उसको अगर एक लेवल हम और अंदर जाएं तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ना कि, और यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कहता है कि देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी टीचर को। मल्टी डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग मतलब कंटेंट तो मालूम होना चाहिए, गणित भी मालूम होनी चाहिए जो पढ़ाना है, फिजिक्स भी मालूम होनी चाहिए, लेकिन वो तो सफिशिएंट है नहीं। उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि बच्चा का मस्तिष्क का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका बिहेवियर कैसे होता है। उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर बच्चे का सोशल बैकग्राउंड ऐसा है तो उसके कारण ये इफेक्ट हो रहा है, उसके साथ ऐसे डील करना चाहिए। टीचर को यह भी मालूम होना चाहिए कि भाई शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, वो उद्देश्य इस तरह से कैसे कनेक्ट होते हैं। तो ये, और मैं तो केवल कुछ बातों को टच कर रहा हूं जो कह रहा हूं उसमें, लेकिन एक टीचर से हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मल्टीपल डिसिप्लिन्स एंड फील्ड्स की अंडरस्टैंडिंग उसको होनी चाहिए। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने ये कहा कि टीचर एजुकेशन जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के अंदर ही हो सकता है कि हम ये मल्टीपल डिसिप्लिन्स को टीचर को समझाएं, वो उनको सीखें, समझें। ये पहला एक्सपेक्टेशन है उनसे। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि इसको ये सीखे समझे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस सीख और समझ के आधार पे इसको क्रियान्वित करें। इस बात को भी हम लोग कई बार भूल जाते हैं। हम लोग, मतलब टीचर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं कि हमने फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ा दिया, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ा दिया, पॉलिसीज के डेवलपमेंट कैसे हुआ ये पढ़ा दिया, पेडागोजी वगैरह पढ़ा दी, लेकिन ये सब अलग थलग नहीं रख सकते। उसको अंततः टीचर को तो साथ में लाना है। ये जो मामला है ये बहुत ही पेचीदा मामला है। डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग फील्ड्स की अंडरस्टैंडिंग को आखिर में इस शिक्षक के मस्तिष्क में और शिक्षक के जीवन में साथ में लाना है, जोड़ना है। इंटीग्रेटेड होल है ये, इसको अलग अलग नहीं देख सकते इसको हम। तो ये कैसे हो, बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशन है। और इससे जुड़ी हुई बात यह है कि डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग, इसको साथ में लाना इतना काफी नहीं है। असल खेल तो यह है, असल चैलेंज तो यह है कि इसको प्रैक्टिस करना हर रोज। डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप उसको साथ भी ले आए, लेकिन आप शिक्षा की जिंदगी में देखिए, उसको रोज प्रैक्टिस करना, इसी को रोज प्रैक्टिस करना, उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, मैं वो कुनकुरी वाले एग्जांपल को ले सकता हूं, जहां बच्चे जो हैं रोज अलग बिहेव कर रहे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, उसी बच्चे का मूड एक दिन अलग होता है, वो एक दिन लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा, एक दिन बड़े प्यार से बर्ताव करेगा। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह के हैं। उतना ही नहीं, आपका मूड अलग होता है ना भाई, आप टीचर हैं, आप भी मनुष्य हैं। तो आप अगर आपके 30 साल के सर्विस को देखेंगे तो उसमें आप कितने तरह तरह के कॉम्प्लेक्स मुद्दों से डील करेंगे अपनी जिंदगी में। तो वी आर रियली टॉकिंग अबाउट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ थिंग्स. We have this incredible expectation from the teacher of bringing all disciplinary understanding together, not just integrating it in the mind, but actually practicing it every day in changing circumstances. Now, this is really
And I really don't think that the world of teacher education has been able to deal with this challenge adequately yet. Of course, there are wonderful examples in the world. ऐसा नहीं है कि बढ़िया उदाहरण नहीं है, लेकिन इस सेंट्रल चैलेंज को, ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन अंडरस्टैंडिंग क्या होती है वो मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा ये मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मालूम है कि उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा, लेकिन इसको सिस्टमिकली टीचर एजुकेशन में किसी भी स्केल पे करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सब बातें मैं दूसरों का क्यों उदाहरण लूं ना। आपने कहा कि हमने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी स्थापित की, वहां टीचर एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, रोज हमारे पास ये चैलेंज है। ये सब बातें हमें समझ में तो आती हैं, लेकिन इसको करना रोज और करना प्री सर्विस जैसे कहते हैं ना, जो बीएड के छात्र हैं उनके साथ ये रोज करना कितना मुश्किल है, उसको हम लोग सब जानते हैं जो यहां बैठे हुए हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए दोहरा देता हूं, वो ये मेरी समझ में कैपेसिटी का जो मुद्दा है उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। कैपेसिटी जो है वो एक तरह से एक आर्च होता है ना, कोई भी आर्च होता है उसका एक की स्टोन होता है, की स्टोन जो उसको होल्ड करके रखता है। तो जो कैपेसिटी है मेरी समझ में ये की स्टोन है, क्योंकि अच्छे बुरे टीचरों को आप जो है वो है, लेकिन ये कैपेसिटी जो है वो की स्टोन है। दूसरा कि कैपेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन नहीं कहना चाहिए, जिस चीज की जरूरत है टीचर के लिए वो बहुत ही मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल चीज है। उसकी थियोरी इसको अगर मैं कहूं तो हमको सबको आती है, लेकिन इसको कैसे रोज करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं बाहर दूसरों को क्यों कहूं, संस्था में कितनी मुश्किल होती है उसको मैं जानता हूं। तो जो मेरी जो दूसरी बात है मैं उस पर जाता हूं, और वो ये है कि मुझे ये लगता है कि ये सब जो मैं कह रहा हूं इसको करने की यूनिक अपॉर्चुनिटी दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी के पास है, एब्सोल्युटली यूनिक अपॉर्चुनिटी। और जब मनीष जी ने अपने संबोधन खत्म किया तो मुझे लगा कि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूं, डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग जिसके कारण नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और उसका डीप कनेक्शन एंड इंटीग्रेशन एंड इवेंचुअली चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस जो टीचर फेस करता है उसके खुद के अंदर होता है, उसको रोज इंप्लीमेंट करना। इसको कैसे किया जाए, मेरी समझ में दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, और वो यूनिक अपॉर्चुनिटी इसीलिए है जो मनीष जी ने कहा था। मेरी समझ में दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी जो है वो मैं उसको आपके एक संस्था के रूप में नहीं देखता हूं। मेरी समझ में तो आपका जो पूरा शिक्षा तंत्र है, दिल्ली टीचर एजुकेशन सिस्टम, वो आपकी दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी है। बिकॉज हम लोगों को जब हम सब क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं तो देखिए सेंट्रल चैलेंज यही होता है, सेंट्रल चैलेंज ये होता है कि जब हम छात्रों को जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं उनको जब हम देखते हैं तो सेंट्रल चैलेंज ये होता है कि भाई क्लासरूम में, यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में से हम पढ़ा देंगे ये सब, लेकिन इसको रोज वो कैसे सीखे प्रैक्टिस के माहौल में, जिसको मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, एक अप्रेंटिसशिप कैसे हो, एक इंस्टीट्यूशन एनवायरनमेंट को हम लोग एक अप्रेंटिसशिप के साथ कैसे जोड़ें, ये सेंट्रल चैलेंज है। तो अगर आप ये सोच के देखें कि रोज सुबह आपके क्लासरूम में, यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में पढ़ाई, चर्चा, बहस होगी, लेकिन रोज दोपहर को वो छात्र जो है वो आपका एक स्कूल में जाएगा जहां पर दो छात्र ही टीचर है, उसके साथ वो अप्रेंटिसशिप करेंगे। आप जरा ये सोच के देखिए, अगर ये 3 साल तक, 4 साल का प्रोग्राम होगा आपका, अगर ये 3 साल तक चला, उससे बेहतर कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं हो सकता। और हम लोग जो करिकुलम डिजाइन करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को चलाने की कोशिश करते हैं, हम जानते हैं कितना बड़ा चैलेंज है ये, लेकिन इसको सॉल्व करने के साधन और इमेजिनेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं सोच पाते हैं ठीक से कि किसी भी स्केल पर हम ये कैसे कर पाएंगे कि हर छात्र को एक जबरदस्त अप्रेंटिसशिप मिले वो 3 साल के दौरान। रोज 50% टाइम आप क्लासरूम में बिताइए, 50% टाइम आप स्कूल के क्लासरूम में बिताइए। अकेले नहीं, आपको अकेले नहीं छोड़ दिया है,
आप एक टीचर के साथ, जो बढ़िया टीचर है और आपके यहां बहुत बढ़िया टीचर हैं, उसके साथ अप्रेंटिसशिप करें। तो मुझे यह लगता है कि दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी के पास एक अनूठी, एकदम अनूठी पॉसिबिलिटी है। वो इस सारी चीज को जो हम थ्योरी के रूप में बात करते हैं, उसको आप क्रियान्वित कर सकते हैं, सही में क्रियान्वित कर सकते हैं। और मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं, देखिए हर चीज में क्या होता है ना, वो हर काम में ये बातें, ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, उसके ऊपर जोर डालना। वो आप लोग कह रहे थे ना कि पॉलिसी और पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में बहुत फर्क होता है। हर पॉलिसी अच्छी बातें करती है, इंप्लीमेंटेशन में कुछ जो ना कुछ बेसिक मुद्दे होते हैं, उनको आप अगर पकड़ लें तो फिर बातें आगे निकलती हैं। तो मेरी समझ में अगर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो विजन है टीचर एजुकेशन को टोटली ट्रांसफॉर्म करने की, उसको अगर करना है तो उसका हार्ट ऑफ द मैटर यही है कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन तो हो, लेकिन उसको आप एक्चुअली स्कूल से रोज कैसे कनेक्ट करें। और वो आपके पास पॉसिबिलिटी है, इतने स्कूल हैं, मेरी समझ में हजारों की संख्या में आपके यहां मास्टर टीचर्स होंगे, मैं उनको मास्टर टीचर कह रहा हूं। उस मास्टर टीचर के साथ उनको अप्रेंटिसशिप करिए पूरे प्रोग्राम के दौरान, 3 साल के दौरान। ये एकदम अनूठा होगा। अब वो आप कर सकते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते। तीसरी बात, और उसके साथ मैं जो कह रहा हूं उसको मैं समाप्त कर दूंगा, वो ये है कि ये जो मेरी, इसको अगर मैं अपना थ्योरी कहूं, मान लीजिए मेरी थ्योरी कि कैपेसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर कैपेसिटी those things are required, but the reality is ki how do you bring it together, how do you bring it in the real life environment together, and that you can't teach inside a classroom, when I say classroom I mean a university classroom. It has to be learned through embodiment of the experience in the school, and that you can do. ये मेरी थ्योरी है। और अगर ये थ्योरी है तो मैं इसके साथ जो तीसरी बात मेरी है उसके साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। आई थिंक दिस इज अ critical, the reason I started by saying कि आप लोग spearhead हो सकते हैं, this is a critical thing for the overall implementation of the national education policy. I really feel that the national education policy is really good, transformative, particularly on the school education side, but its keystone is whether we are able to transform the world of the teacher or not. That is the keystone. उसके लिए तरह तरह के मामले हैं। We know how many fraud B.Ed colleges are run. We know how many completely they are just selling degrees. बिल्कुल बकवास है, ठीक है, एब्सोल्यूट बकवास। Now we also know, and आप लोग जो सरकार में वो लोग तो अच्छे से जानते हैं, we also know कि उसको बंद करना कितना मुश्किल है। आज से 3-4-5 साल पहले एनसीटी में बढ़िया चेयरमैन थे, आप लोगों ने काम किया है, बंद करने की कोशिश की, हर हाई कोर्ट में एक मामला, तो वो बेचारे एनसीटी चेयरमैन रहने के बजाय हाई कोर्ट से हाई कोर्ट भाग रहे थे, ठीक है। तो वो इस सेक्टर का जो करप्शन है, जो डिसफंक्शन है, वो एक है। अब उसको बंद करना एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन जी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। तो वो शॉप्स को, उन दुकानों को बंद करवाना एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी समझ में एक स्ट्रैटेजी ये है कि क्या हम लोग कुछ इस तरह के एग्जेम्पलर प्रोग्राम्स, इंस्टीट्यूशन सेटअप करके दिखा सकते हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? मैं आपको एक पुराने बात की याद दिलाना चाहता हूं। मेरे हम उम्र लोग जो यहां बैठे हुए हैं, या मेरे से ज्यादा उम्र के जो लोग बैठे हुए हैं, उनको याद होगा कि हम लोग 70-80 के दशक में जो कुछ नहीं कर सकता था वो लॉ करता था। याद होगा आप लोगों को, जो कुछ भी नहीं कर सकता था ना, वो एलएलबी करता था। एक जमाना ऐसा था, उसमें एक कंप्लीट बदलाव आ गया है आज। और उस बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले की है, रोल अदा किया है ये जो नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने एग्जाम्पलर प्रोग्राम्स बनाए, और एग्जाम्पलर प्रोग्राम्स के थ्रू नॉट जस्ट क्वालिटी इंप्रूव बट द ओवरऑल परसेप्शन चेंज इन सोसाइटी कि लॉ क्या चीज होती है। और भी मुद्दे थे। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर हमको जेन्युइनली इंप्लीमेंट करना है,
हमें मालूम है कुछ चीजें इंप्लीमेंट होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ अधकचरी होंगी, कुछ अच्छी होंगी, लेकिन अगर कीस्टोन के हिसाब से देखें तो टीचर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना कीस्टोन है। और उसके लिए एक स्ट्रैटेजी तो है कि दुकानों को बंद किया जाए, लेकिन मेरी समझ में वो लड़ाई चलती रहेगी हमारे देश में। उससे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है एग्जेम्पलर इंस्टीट्यूशंस दिखा सकें कि ये क्या हो सकता है अच्छा टीचर एजुकेशन। और उस संदर्भ में आप लोगों की पहल अनूठी है, आप लोगों की अपॉर्चुनिटी अनूठी है। आप लोग जो कर रहे हैं वो हम तो सब यही कह सकते हैं, हम आपके साथ हैं। नॉट जस्ट आवर बेस्ट विशेस, बट हम अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करेंगे। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और फिर से क्षमा चाहता हूं कि अच्छा यही होता कि मैं आपके साथ वहां पर होता। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल नगेट्स ऑफ विजडम। और आपने बात करी कीस्टोन की, which is actually required for the transformation of teacher education, and how an intrinsically motivated teacher can be given the suitable conditions to be motivated in all the senses. So thank you so much for such an excellent sharing. And the house is now open for questions. So if you have any questions from Anurag sir, we can take them. And we are also live on YouTube. So I have just received a question. In the meanwhile, I would just read out this question for you, sir. The question is from Amrita Khurana ma'am. She is asking sir कि हम ऐसा environment कैसे बना सकते हैं जहां पर एक टीचर की कैपेसिटी सफलतापूर्वक बन सके। Sir, shall I repeat the question, Anurag sir? I heard it. I'm just pausing because it's a very difficult question to answer. It's a very difficult question to answer. There are there are so many things. I would just say the gist of it. The gist of it in my mind. The gist of it in my mind is that, you know, we say such big things, right? We just say such big things about school education and teachers and the importance of teachers and their role in our lives, in our society and stuff. We say all that, right? You know, I'm not talking about our society, but our education system in its behavior, if it can actually demonstrate that respect to the teacher, I think that will make a huge difference. Why is it that when our education is failing, when, we are very disappointed with what our school education is able to achieve for our children and for our country. We are all that. But when that happens, why is it that the automatic reaction of everybody in the system, I can't say everybody is too strong, but most people in the system and society is to blame the teacher? Why should we do that? So if, forget the overall society, but if the system can actually change its approach to the teacher, where it is empathetic to the teacher and her challenges, rather than being dismissive and blaming of the teacher, I think that makes for all the difference, because everything else will follow from there, right? And we're just scapegoating teachers all the time. Instead of that, if we recognize that the teacher is actually the keystone, and what we do with her is really what is enabling education to happen or not happen, will make all the difference. So I would say an empathetic approach to the teacher on a continuous basis in the system will make for all the difference. And then all other actions will follow, actually. Thank you, sir. So basically we need to empathize with all the efforts that teachers are doing. हमारे YouTube के जो दर्शक हैं वो और सवालों के साथ आ रहे हैं सामने। एक सवाल आया है शिव शाह जी का YouTube पर। आपने देश विदेश के शिक्षकों के साथ बहुत काम किया है। इस संदर्भ में आपने क्या क्या पॉजिटिव बदलाव देखे हैं जो हमें प्रेरणा दे सकें? तो सर इसका जवाब अगर आप दे सकें। शुरुआत तो वहीं से करूंगा जहां मैंने उस वाकये की बात की थी कि एटीट्यूड के रूप में, मतलब जनरल जिंदगी में अप्रोच क्या है उसके रूप में, मैंने करीब 20-25% शिक्षक तो ऐसे पाए हैं जो डीपली कमिटेड हैं, डीपली मोटिवेटेड हैं। 50-60% शिक्षक ऐसे पाए हैं जो एनवायरनमेंट ठीक हो
बढ़िया हो, सपोर्टिव हो तो अच्छा काम करते हैं। और 10-15%, 20% शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कुछ भी करें बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। वो ठीक है भाई, हर जगह होते हैं, वो तो हमें कहाँ नहीं होते हैं? तो मेरे ख्याल से पहली बात तो मैंने ये सीखी है कि हमारा दिमाग जो है, हमारा काम जो है, वो उस 20% के ऊपर फोकस ना हो जो कुछ नहीं करते हैं, वो ये इन 80% के ऊपर फोकस्ड हो जो अंदर से कुछ करना चाहते हैं या एनवायरमेंट मिले तो करना चाहते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है क्योंकि वो रोज चैलेंजेस जूझते हैं, तरह तरह के चैलेंजेस जूझते हैं, मैंने ये देख रहा है कि उनमें सीखने की ललक होती है, सीखने की ललक, क्योंकि वो जानते हैं कि देखिए लेकिन मैं ये पढ़ा नहीं पा रहा हूं, अगर मुझे कोई ये सिखा देगा कि इसको कैसे पढ़ा सकूं तो मैं एक्चुअली सीखना चाहता हूं। तो ये एक बदलाव कंटिन्यूअसली मैंने देखा है। एटीट्यूड है, उसके बाद सीखने की ललक है, उसमें मैं बदलाव देखता हूं। तीसरी बात यह है कि आप सीख जाते हैं लेकिन उसको क्लासरूम में कैसे परिवर्तित करना, उसको मूर्त स्वरूप में क्रियान्वित कैसे करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मैंने वहां भी बदलाव देखा है, लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं। दरअसल हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मैं वो जशपुर नगर के स्कूल में क्यों गया था, क्योंकि वो जो टीचर हैं वो ये कहते हैं हम लोगों को, देखिए साहब ऐसा है कि आप अपने, हमारा कुछ हम टीचर लर्निंग सेंटर वगैरह चलाते हैं वहां पर, तो अब वहां हम सीख तो जाते हैं लेकिन अब उसको जब यहां पर करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करेंगे, आप आइए ना यहां मदद करने के लिए। अब वो हमारा सही से चैलेंज है। तो मैंने बदलाव हर जगह देखा है और इसीलिए इतने वर्षों के बाद तो लोग कहते हैं कि आप शिक्षा में काम करते हैं इतने वर्षों से, आप डिमोटिवेटेड कैसे नहीं हो जा सकते, क्योंकि इतनी समस्याएं हैं, बदलाव नहीं होता। लेकिन मेरी जिंदगी तो बिल्कुल उल्टी है। मुझे तो ये लगता है कि हर महीने, हर साल में जितना जाके बाहर देखता हूं, मेरा मोटिवेशन बढ़ता ही है, क्योंकि लोगों में मैं रोज बदलाव देख रहा हूं, अच्छे लोग रोज देख रहा हूं। थैंक यू सर। कुछ सवाल हमारी सभा में से लोग पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ माइक प्रोवाइड कीजिए। जी सर, बताइए। जी, आवाज़ आ रही है। जी। So I believe the teachers are the primary stakeholder who can bring in this radical transformation which all of us believe or all of us dream to bring in. So my questions here is, how do we ensure the socio-emotional well-being of teachers to enhance their capacity? You're all asking I heard you. It's just that you're all asking very difficult questions, you know. Request something of you. Maybe I can take, if there are audiences questions, maybe I can take 2 more questions and respond to 3 together. That might be. तो अभी 1-2 सवाल और ले लेते हैं हम, फिर एक साथ ही उत्तर लेंगे इसका। जी। नमस्कार अनुराग बहर जी, आप जैसे NEP में एसोसिएट हैं और आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत वास्ट है, तो मैं सब साथियों की तरफ से, तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मेरे मन में था। थैंक यू। हो सकता है तो व्यवस्था में हम मानक तय कर सकते हैं पॉलिसी में। जी, तो अभी हम स्टॉप करते हैं प्रश्नों को, जवाब लेने के बाद फिर हम, समय बचेगा तो फिर और देखेंगे। जी। अनुराग जी, अभी आप कनेक्ट हैं ना हमारे साथ? मुझे लग रहा है कुछ एक हम्बल रिक्वेस्ट और भी थी, हमारे क्वेश्चन स्पेसिफिक, प्रिसाइज और ब्रीफ हो, हम उसकी भूमिका ना बांधें, इट विल बी इजियर टू कॉम्प्रिहेंड आल्सो। If sir is connected, then I have a question for Anurag Bihar sir. Okay. My question is, what elements do you suggest to be incorporated in school education to make students get attracted towards
ऐसे ऐसे राष्ट्र निर्माता निकालेंगे जो बच्चों के जिंदगी पे 360 डिग्री काम करेंगे और उन्हें एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा आईएएस, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा वकील, पत्रकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उनको एक अच्छा मानव बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे राष्ट्र निर्माता निकालेंगे जो बच्चों के जिंदगी पे 360 डिग्री काम करेंगे और उन्हें एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा आईएएस, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा वकील, पत्रकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उनको एक अच्छा मानव बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे राष्ट्र निर्माता निकालेंगे जो बच्चों के जिंदगी पे 360 डिग्री काम करेंगे और उन्हें एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा आईएएस, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा वकील, पत्रकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उनको एक अच्छा मानव बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे।
ऐसे राष्ट्र निर्माता निकालेंगे जो बच्चों के जिंदगी पे 360 डिग्री काम करेंगे और उन्हें एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा आईएएस, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा वकील, पत्रकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उनको एक अच्छा मानव बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। ऐसे राष्ट्र निर्माता निकालेंगे जो बच्चों के जिंदगी पे 360 डिग्री काम करेंगे और उन्हें एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा आईएएस, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा वकील, पत्रकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उनको एक अच्छा मानव बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। ऐसे राष्ट्र निर्माता निकालेंगे जो बच्चों के जिंदगी पे 360 डिग्री काम करेंगे और उन्हें एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा आईएएस, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा वकील, पत्रकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उनको एक अच्छा मानव बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे।
यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे राष्ट्र निर्माता निकालेंगे जो बच्चों के जिंदगी पे 360 डिग्री काम करेंगे और उन्हें एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा आईएएस, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा वकील, पत्रकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उनको एक अच्छा मानव बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। Requesting all the members who are present here today to please enter the hall so that we can start with the panel discussion. There's very little time that we have on hands, and there is quite elaborate discussions that we are going to witness. So requesting one and all to please take their seats as soon as possible. Welcoming you once again to resume with our program. After the sunny, breezy tea break, we now have our panel discussion on teacher education and new education policy 2020. As research shows, among all educational resources, teachers' abilities are specially critical contributors to students' learning and consequently the success of a nation to advance in its economic, social, and political spheres, as said by Hammond in 2006. The new education policy emphasizing on transforming teacher education by streamlining diverse streams of teacher education, such as recruitment and deployment, service environment and culture, continuous professional development, career management and progression, and setting professional standards to teacher education. In order to understand the nuances of teacher education in the light of New Education Policy 2020,
The panel shall consist of experienced panelists. They will share their ideas, opinions, research while delving deep into determining the future trajectory of teacher education in India in the light of the new education policy. The panel shall also discuss the framework and strategy for implementing the provisions of NEP 2020. Now, let's get to know our panelists better. It's a proud privilege to have Professor it's a proud privilege to have Professor M. Sarangpani ma'am, who's a professor of education and chairperson of Center of Excellence in Teacher Education at the Tata Institute of Social Science, TIS. She co-led the District Quality Educational Project and led the Connected Learning Initiative between 2015 and 2020. Ma'am was also a member of the Steering Committee of the National Curriculum Framework 2005, a member of the National Council of Teacher Education, and has worked with UNESCO Teacher Task Force. It's a privilege to have you, ma'am. मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऊपर आइए स्टेज पर. Our second panelist is Ashwad Bharatsar, who's currently leading the movement building cluster at Teach for India, which aims to engage and mobilize all primary stakeholders, that is students, parents, educators, TFI alumni and government officials, towards ensuring an excellent education for all children. Previously, Sir has led the government relation vertical in Pune for 3 years and the Firki Teach for India online platform for education for 5 years. Welcome, sir. Our third panelist is Dr. Greta De Souza. Ma'am, could we have you on stage? Ma'am is an associate professor at the Christ University and serves as the head School of Education. She supervises the doctoral students and teaches postgraduate and graduate courses in teacher education. An expert in adolescence education, Greta ma'am equips professionals, teacher educators, and the pre and in-service teachers to reach out to institutions in different learning contexts to make learning effective, engaging, and productive. It's a privilege to have you, Greta ma'am. Our fourth panelist for panel discussion 1 is Ramya Venkataraman, ma'am. She's the founder and CEO of Center of Teacher Accreditation, an organization which aims to recognize teaching excellence and create career pathways for teaching profession, CENTA, C-E-N-T-A. Ramya ma'am is known for pioneering several on-the-ground reform efforts in both school education and skills in India. Ramya ma'am was recently elected an Ashoka Fellow in recognition of her leadership and continued contributions to the education space. This is our esteemed panel, and to moderate the esteemed panelists, we have our moderator, Mr. Aditya Natraj sir. Sir, welcome. Aditya sir is the CEO of Piramal Foundation and the founder and director of Kevalya Education Foundation, KEF. KEF supports large-scale systematic changes in public education systems in India. Previously, Aditya sir was the director of Pratham in Gujarat for 5 years and continues to serve on the governing board of the Quality Council of India, the Akanksha Foundation, and the Bridgespan India. He has been awarded the Times Now Amazing Indian Award in the education category. It's a privilege to have you, sir, and we'll have the session moderated by Aditya sir today. तो माइक आदित्य सर को ओवर है, प्लीज सर स्टार्ट. Thank you. So, welcome everybody to what I'm hoping is a very nice, engaging conversation. Anurag already set up the conversation very well. Manish Sisodia ji said there's no implementation. So, I want to focus on how we can help create some ideas around implementation. Anurag mentioned the importance of capacity. So, this entire panel discussion is focused only on teacher education. NCF में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टीचर एजुकेशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में, उसी के बारे में बातचीत करेंगे. और एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि 4 जन जो यहाँ पे हैं अलग अलग टीचर एजुकेशन के भाग में उनकी रिसर्च है, उनकी एक्चुअल प्रैक्टिस है. तो पैनल डिस्कशन को हमने इस तरीके से सेटअप किया कि ताकि हम पहले जानें कि उनके राय क्या हैं, उनकी स्पेशलाइज्ड एरिया की रिसर्च से हम क्या सीख सकते हैं, और फिर थोड़ा ऑडियंस और हम सब चर्चा भी करेंगे. So if we can start with you, Padma, you've been part of the education policy environment for some time,
And if I can ask a little bit of a zoom out question, like Rajneesh sir had said, from 1948 there has been some sort of education commission, Kothari commission, Mudaliar commission, all that. Has each of those discussed teacher education specifically before? And is there anything really new about teacher education in NCF now? NEP now, sorry. Today, certainly over yesterday and today, I do feel like zooming back for this wide-angle, both policy lens as well as what has happened over the last 30 years. I've been meeting people who were students when I began my career in Delhi with the BLEd program from the very first batch. And so it really reminds me that it's not only movement in policy, but also movement in practice. And responses to opportunity that policy has opened up that we should be thinking about and learning from. So if we think of the trajectory, we really should think of two dimensions. One is the trajectory of curriculum and pedagogy and its transformation. Okay. And what we certainly note is that until about the late 90s, the mid to late 90s, the paradigm of teacher education was quite, located within behaviorism as the main theoretical psychological inputs, very little understanding of the importance of sociology to orient teachers to India, and overall teachers being seen as delivering a curriculum that has been developed by somebody else, so primarily oriented around textbooks rather than as being autonomous professionals. And I certainly take pride with being associated with the BLEd, which I think really began to transform that vision of teacher education. The second, which we should think about, is the governance and provisioning question. Okay. And there we actually see a lot of consistency. It's not like there has been any real shift in the overall policy imagination of provisioning. I think NEP, the new national policy on education of 1986, was the single unique attempt by the government to invest resources in building institutions for teacher education. And even while that effort was going on, the whole mission-driven mode of doing teacher education shifted the focus onto in-service teacher education. So pre-service actually became neglected. And many people were skeptical whether it's worthwhile investing in pre-service teacher education, thinking it's one step away from the classroom. So let's work with the teachers who are in the classes. Let's not worry about the teachers who are not yet there. And I think that that has had a huge impact we don't see policy vigorously supporting investment of state in pre-service teacher education. We don't see any articulation of policy on in-service teacher education. And there's been pretty much consistency on that. The second problem is that the demand for low-quality teacher education has not gone away. Why does it exist? Because of the demand for it. And we really have to crack the question of why is there a continuing demand for low-quality pre-service teacher education. And we have to think very hard about where are the opportunities for teaching actually emerging? What are teachers being paid? And understand that whole cycle which is allowing. And we don't seem to have any clear policy response to this very core issue. So these are just some observations in policy. What I took away is that while from a governance and provisioning point of view, we've been reasonably consistent over the last 35, 40 years. Without doing too much. Without doing too much. On the other hand, actually on the pedagogy, the curriculum that's available, there's been quite a transformation. So could you help decode that in NEP? So you said in the past it was much more looking at the teacher as a way of delivering a curriculum which was preordained. What is this NEP? So that's where I think the idea of the university is so central. Okay. In the preparation of teachers. The idea of the university is linked deeply with research that leads to the production of new knowledge. And that really means that you are in a liberal space and you're engaging with ideas. You're not just being prepared to deliver a practice. And the NEP places teacher education in the university. And I think this is something very, very important. In a way, we may say that secondary teacher education was already in the university because the B.Ed degree is a university degree. But the NEP is actually asking for
elementary teacher education to be a part of the university. University as well. Early childhood teacher preparation, all the nursery school teachers, all of them which are right now in the unregulated private sector, for that also to come into the university. So I think it is really now that the need for knowledge, understanding of teacher preparation is going to grow. Because as these practices come into the university, within the university we really have to think. It's not going to be enough to just keep teachers in classrooms and expect them to learn only through apprenticeship. We also have to think what is valuable to teach. How should we get teachers to think about their activity and their professional identity? So I really am hoping that this NEP bringing teacher education widely into the university is going to lead to a lot more revitalization of the discipline and the practice within the university. I think the BLED did it for elementary education to some extent, but we now need it to happen at a national, as in like a national movement. So the shift in curriculum seems to have policy support, the shift in the way we look at teachers seems to have that. But you also see a lot of these existing institutions, right? NCT, UGC, NAC, NCRT. How are they going to interface with this NEP policy? It's not very clear to me, because while the NEP is saying and putting it into policy, it's really leaving the initiative to governments like Delhi to put the money out there behind the idea. Okay. Otherwise, it's expecting private institutions to reinvent themselves, and everybody's really struggling. How are we going to become part of a university system? Because these changes are required inside NCT, inside UGC and NAC as well, aren't Well, they? the NCT, it's going to shift NCT's regulatory work into the UGC. That is what the policy actually recommends. Okay. I hope that that's going to be good for the sector, because we have been an over-regulated sector for all the wrong reasons. And I'm really hoping that we are rescued from reductionist regulation. Okay. There's a lot more to probe, but I'd just like to move, thank you for your opening comments. I'd love to move to, maybe to Greta. Greta, for the first time, at least maybe I've not read the policy well enough, but for the first time, school environments and culture have been mentioned as an entire section inside teacher education, specific recommendations about how teachers need an environment in order to perform has actually been mentioned. You've spent a lot of your career looking at school environment and culture. Could you help decode a little bit of this? Has it been mentioned before? Is it new in NEP? What does it even mean? What does school environment and culture even mean? I would share my experience based on the autonomy that we get as a university. And I come from a background where we not only cater to the pre-service teachers, but also in-service teachers. So there should be a connect between the pre-service teachers, the in-service teachers, and the schools that we intern with. So basically, I have brought in those 5 points that come under NEP 2020 for school education, which points out from 5.8 to 5.14, and the focus there is on service environment and culture. So let me just illustrate those 5 points. The first point is with regard to do the schools have the adequate and decent and pleasant service environment, service conditions? Are they adequate? Do they have the basic amenities? Do they have, are they conducive for the learning environments? Is it inclusive in nature? When we look at the stakeholders here, probably the school would look at a support system, because quite a number of those schools do not have that support system. So if you're looking at providing this support system, probably it would lead to better productivity. The same point holds good for the students, because are we able to retain the interest of the students, keeping in mind the adequate facilities that are available in the schools? Is that going to motivate them? Are we going to prepare them as productive citizens for the state, for the country? And for parents, they are disillusioned, because are they able to measure the learning outcomes if there are no support systems that are provided? The second that the NEP talks about is with regard to innovative formats. This is not new, because school complexes have been mentioned in the earlier policies, but with regard to the execution, the implementation, or the evaluation of these school complexes. So here it was the principle of give and take, where these school complexes could provide or facilitate relationships among the teachers, among the community. I think they would probably look at best practices.
but I'm in question about does this really help teachers understand and are they able to relate with the best practices? I think here the NEP is trying to look at identifying how we can reduce the shortage of teachers, because that's the main concern. The third will be, would the teachers be able to be part of the school management committee? Would they play an important role in the school governance? The third is with regard to, would the teachers move away from the tasks that are assigned to them in terms of teaching and learning and evaluation to the non-teaching tasks that were assigned? I think majorly it would be the election duty, or it could be with regard to the midday meal scheme, the implementation of it, the evaluation of it. And also, I think they're bogged down with a lot of administrative tasks. And the last one would be with regard to teacher autonomy. I think NEP just talks about the choice of pedagogy, but I think in terms of teacher autonomy, that's much more to it. It's just not the choice of pedagogy. It would be also to look at an outcome-based education, measuring these outcomes, competency-based framework. I think the teachers need much more than just being in the classroom. And how are we going to look at the teachers in terms of in-service and pre-service teachers? I think you can take mine. Hello. Thank you so much for summarizing that so well. So apart from the actual preparation of the teachers, the importance of the environment, the school complexes, not being involved in administrative issues, getting involved in the school management committee, and autonomy when she's in her workplace, all these are also things that improve service conditions, and therefore I think it's great that they're at least mentioned in policy. How they become practice is going to be the next question which we go into. Ramya, you've spent a lot of time looking at teacher certification, at what are the motives, what are the motivations to ensure that actually teachers improve their practice. What can you share from your experience and the link to NEP? Are you happy about the direction it's going? Yeah, so teaching, when you see, like law or medicine or some of these professions, it's an ancient vocation. बहुत thousands of years से ये चल रहा है और इसको हम एक vocation की तरह मानते हैं, मतलब टीचर को सर्व करना है सोसाइटी. Now, when you dial forward to the modern world, medicine, law, chartered accountancy, any of these areas, of course, हम expect करते हैं that when a cardiac surgeon tells you that you need a bypass, he is telling you with full integrity. He or she is telling you with full integrity. We of course expect that. But we do not expect him or her to do the bypass as a philanthropic activity. We expect him or her to do it as a professional activity with appropriate reward, recognition for it. Now, when we look at teaching, somehow over the years, हम लोगों ने ये एक attitude as a society लिया है कि teachers have to serve society, they are building the future of the nation, they are there to, give themselves, to sacrifice. And that's all okay, but it is completely unfair to expect that teachers should do all this without expecting career growth, reward, recognition for themselves, which all of us expect in our own professions. So this is a very fundamental sort of hypothesis we started out with, and we are seeing it playing out, which is when you give career growth, when you give reward recognition, तो teachers अपने आप अपने competencies को improve करते हैं. After all, you don't go into a doctor's cabin and say कि आप operation ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए. For any adult, the need to improve your competencies has to be something that is driven because you are going to see professional growth as a result of that. And when we set up that professional growth, whether as a government system or as a private system, competency improvement, we find that teachers are able to drive on their own. And on their own, obviously with certain pieces of support from the system, and we can talk about that, but very heavily on their own.
But does NEP speak about this sort of career growth in order to drive sorry, competency? I missed the last part of that. Yeah. So the good thing about NEP, I think NEP has legitimized this. Okay. So when we say, okay, teachers should have career growth, etc., you always have the question of, is this a profession where you should talk about career growth at all? And I think NEP 2020 has fully legitimized this in Chapter 5, saying that, yes, teachers' careers should be based on merit, and teacher career growth is an important priority for states and for private systems. But what is career growth? I started as a teacher in grade 6 teaching math. Don't I just continue to teach that for the next 10-15 years? Yeah, great question. So, career growth can take many different shapes and forms, and frankly, I think all of us are gradually learning. And अलग-अलग सिस्टम में भी ये अलग-अलग होता है. जैसे गवर्नमेंट सिस्टम में आप देखें तो there are some teachers जो aspire करते हैं कि वो रिसोर्स पर्सन बने या हेडमास्टर बने या ब्लॉक ऑफिसर बने. कुछ लोगों का ऐसा एस्पिरेशन होता है. और अगर कोई गवर्नमेंट सिस्टम, जैसे हरियाणा ने एक पॉलिसी पास किया है कि इस तरह के कुछ सिलेक्शंस के लिए वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करेंगे, तो अगर गवर्नमेंट सिस्टम इस तरह का पॉलिसी लेके टीचर्स को प्रमोट कर सके, उस तरह का एस्पिरेशन दे सके. सेकेंडली, जो लोग टीचर्स रहना चाहते हैं, एंड ये इट शुड नॉट बी कि करियर ग्रोथ के लिए आपको ब्लॉक ऑफिसर बनना पड़े. यू शुड बी, एज यू राइटली सेइंग, एबल टू रिमेन अ टीचर एंड सी करियर ग्रोथ. नाउ देयर वी आर फाइंडिंग दैट देयर आर क्वाइट अ फ्यू opportunities that are possible. So for example, along with your role in teaching, can you get financial rewards and recognition which grow based on your merit, and don't just grow because your age has grown, 20 years which and will 25 naturally years. grow. Yeah, so don't just grow because of that, but grow based on your merit. Similarly, for those who are interested, can you have roles where you can contribute to content? जैसे यूपी गवर्नमेंट ने मेरिट बेस्ड टीचर्स को सेलेक्ट किया है कि वो कंटेंट में कंट्रीब्यूट करें अपने एक्सपीरियंसेस से, एक्सेट्रा. एंड प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत करते हैं ये. नाउडेज देयर आर ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज फॉर सप्लीमेंटल अर्निंग. सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. जैसे सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ एक साइंस एंड मैथ्स का ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहता है कि टीचर्स फ्रॉम इंडिया 2 घंटे स्पेंड करें रोज टू टीच माई स्टूडेंट्स ओवर देयर ऑनलाइन. दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ which can happen in a merit-based manner if each system contributes towards the merit rather than focusing कि टीचर का ट्रेनिंग ही कैसा हो, क्योंकि ट्रेनिंग हो जाएगा. जब अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेनिंग अपने आप हो जाएगा. तो अनुराग जी ने बहुत ध्यान दिया था कैपेसिटी के ऊपर. तो आप बोल रहे हैं कि कैपेसिटी वो अगर बढ़नी चाहिए तो ध्यान तो देनी चाहिए कि करियर प्रोग्रेशन हो रही है कि नहीं, क्योंकि अगर करियर प्रोग्रेशन है तो ऑटोमेटिकली फिर इसके ऊपर डिमांड तो आ ही जाएगा कैपेसिटी के. Exactly. So capacity, of course, there is a lot of work that needs to happen on the capacity building side, particularly in terms of how do we improve different forms of training. Nowadays, there is a lot of technology available through which parts of training can happen through technology, parts can happen physically, hybrid models. Also, how do we not think of teacher training as events but continuous learning? So one of the things we are trying to do is सुबह उठते ही 5 मिनट आप कैसे स्पेंड करें क्विकली देखने के लिए अपने प्रोफाइल में कि आज का नया रिसोर्स क्या है या आज का क्विज क्या है, उसको किस तरह से आप आंसर करके कुछ सीख सकते हैं 5 मिनट में. That's we have to align our way of training also with the modern world. So some of that work is necessary, but it's not sufficient because आप 5 मिनट क्यों देखेंगे? आप yes, partly देखेंगे क्योंकि आप बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं. That is an inherent motive of a teacher. But in the long term, आप इसलिए भी देखेंगे क्योंकि जब आप बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, आसपास के लोग recognize करते हैं कि हाँ, ये एक अच्छा टीचर है, अच्छी टीचर है. And that recognition is fundamental for a human being, which we cannot take away from the teaching profession. Thank you. You've set it up very nicely for Ashwad. तो पहले तो हमने बातचीत की
पद्मा जी के साथ कि कैसे हाउ इट हैज चेंज्ड इन द लास्ट 30 years to focus much more not just as a teacher as a tool, why it's important to change the school environment was what Greta was talking about, and you're talking about career progression and incentives, rewards and recognition. You have done a lot of work, Ashwat, in the area of how to use technology to enable a lot of this. आपकी क्या लर्निंग है उसमें से कि टेक्नोलॉजी क्या टीचर्स यूज़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कहाँ पे यूज़ हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती है? Yeah, thanks Aditya. Good afternoon, everyone. So couple of things, right? So one is when we are looking at technology for teacher education, it falls under different categories. But the better question to ask is, why do teachers need to use technology? And that'll be a better starting point, right? And so in our experience, when we talk to teachers, ask them, why do you go online for the purpose of your work? Most often it comes to saying that we are looking for specific lesson plans, worksheets, activities that we want to, and really high quality, curated, aligned to the curriculum that we have, right? So that's one place where you can look at technology. But ultimately technology just becomes a delivery tool, right? So today you might use your own app and system, tomorrow you might use a WhatsApp system, and it keeps evolving. But the programs around that becomes a more important piece to focus on. Actual content. The content and how the content is also flowing to the user or to the learner, right? So there, more than the content, what at least I have realized is online learning or blended learning is a relatively new habit for most of us, especially for adults who have not learned that way, right? And so where we've seen add more value beyond a particular content like lesson planning or assessments or classroom culture is how do teachers actually learn online? Like what does self-paced learning time mean? What does time with peers mean? What does practice mean? How do these systems come together? So a lot of emphasis is also given on the structures for online learning, and my experience has been that these structures have been far more well received, far more relevant for teachers, because tomorrow they might move to a different topic or a different partner, but these structures are building that muscle for them to say, how do I absorb? And only if teachers are able to do that, then they're able to use technology in their classrooms as well. So that's largely been, my reflections with use of technology. आपके कोई उदाहरण है जहाँ पे टीचर्स एक्चुअली टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, कहाँ पे सक्सेस हुआ है, कहाँ पे फेलियर हुआ है? In their own development or in their training? नहीं, उनकी खुद की डेवलपमेंट के लिए. Yeah, so in their own development, see, I think I'll go back to the the breakdown which Mr. Anurag had shared, right? You have your 15-20% teachers who are, say, motivated to try new things. So for these teachers, it doesn't matter what technology tool is there. They'll come to a center, they'll go to Firki, they'll go to Diksha, they'll keep looking around and pulling things. But where it's been more effective is for the in between 50-60% saying, is there a certain structure that's given? So in our own experience as well, what we've seen is where we work in schools which have a strong school leader and good school culture, we are able to bring in technology-based learning in a very resourceful way. So you don't need to constantly be pulling teachers out of their classrooms, out of their homes during holidays, during post-school hours, none of those things. You're able to package it in a way saying that you have some time to, understand this on your own. This is a space where we'll come together as a group and as an expert and learn. And these are spaces where you will practice and you will tell us what's working well so that we can learn from you. So keeping it a little bit two-way. So that's the main example that comes to my mind is our own implementation with certain schools, where we've seen a good school leader and good school culture really kind of takes them to the next level. So when DTU is being set up, what are the things that can be done with technology and what would you advise them not to do with technology? Yeah. So I would say come to technology as your delivery tool, right? So first of all, when I'm looking at, so let me also, for my own comfort, broaden this question, right? So when I'm looking at what NEP is brought in for teachers and teacher education, I'm basically classifying them into three parts. So the first thing where a lot NEP is speaking about it is what kind of talent is getting into teaching. And that's where you're getting into these dual degree, multidisciplinary approach. And to what ma'am said, a lot of this will have effects in secondary, but if it's able to have effects in elementary, primary, secondary, in tertiary versus primary, secondary education, then that's going to be a game changer because there's a demography there, right? The second piece is the entire professionalism of teaching, right? And this is where again the university can come in. Like, what is, I know Ramya spoke about the career trajectory, but how do you look at teaching from a static profession to a dynamic tenured profession, right? I know the NEP is talking about the mentoring mission around this. So
there again technology becomes a way to connect that program. So I would always come to technology as the how of a delivery tool, because there are certain foundational questions that still needs to be answered. And the most important where technology can play a role is the entire softer aspect. Like today we don't see teaching as an aspirational profession, right? There's a lot of teacher shortages. People want teachers to come, but people are not applying. If they're not applying, if they're applying, they're not good enough, right? And the reason behind that is to say that if this was your classroom, right, and let's say you have 50 to 60 students, you are responsible for each one of them's learning. Let's say they're all coming in a blank slate. Every day you're responsible for what they learn, how they interact with each other, have they learned to use the computer, have they learned to follow a schedule, and you're kind of, making sure every child does this or every young adult does this. It's a very tiring job. The idea of work-life balance is not there. So it's not becoming a career where somebody says, I can grow, I can contribute, I can stay for the long term. And when you start identifying problems like this, then you'll see how technology can solve for it. Solving for some. That's how I would keep the approach as. Great. Thank you so much all for sort of opening out your areas of research and experience. For me, honestly, it's a bit overwhelming. When you think about it, we don't even have, I don't think we have even 1,000 people going through an integrated multidisciplinary teacher education program in the country today. And you have 9 million teachers who technically need that capability. So are we just stuck that for the next 20, 25 years it's going to take by the time we figure out how to do this teacher education, how to involve technology, how to set school environments? Are we going to lose one more generation? Is this going to continue to be in policy and my daughter is going to be sitting on the same stage 25 years from now discussing the same issue? Or what is it going to take to implement this? What is it going to take to implement this faster? Because otherwise it just seems enormous. The task seems too big to me. मनीष जी बता रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए करना क्या है, तो ये सब उद्देश्य तो हमने सेट कर दिए, उद्देश्य तो वर्ल्ड क्लास से भी ज़्यादा हैं, लेकिन करने के लिए So if I can maybe take one crack, I mean, there's no easy answer to it, but I can just give a couple of ideas and pass. But so एक तो है कि there is a very important interplay between the government system, the university, and the market. Okay. Which is a powerful interplay, and I don't think we can ignore any of these points in that interplay. And what I mean by that is, अगर हम सोचें कि एक policy बना है, उसको एक government या एक university इतने साल में implement करेगा, frankly, as you're saying, it is completely overwhelming. 20 साल जैसे लगेगा. However, if you think that no, there is also a market out there of parents and students who are voting with their feet, saying कि मुझे इस स्कूल में जाना है, इस टीचर के पास पढ़ना है, and you see how can I leverage the power of that market, that can speed up a lot of things. So for example, as a university, as DTU, if you are able to communicate to the parents of Delhi कि ये कुछ teachers हैं जो बढ़िया teachers हैं हमारे system में, ये कुछ schools हैं जो बढ़िया schools हैं हमारे system में, and therefore start creating demand for those teachers, for those schools, then automatically the market starts shifting in favor of quality. I think the biggest challenge that a good quality teacher or a good quality school faces is that, I think Dr. Padma mentioned it, that the demand for poor quality is so high that how do I differentiate myself as a good quality teacher or a good quality school? So one part of it is, of course, okay, I can get, say, certified in some manner, etc., etc. But if I have the backing of, say, a DTU to say, okay, it can project me out there as a good quality teacher and school, then the market starts shifting positively towards quality. So if you're sitting at a governing council meeting of the DTU today, what is one recommendation you're passing? I would say explicitly recognize good teachers and schools that have good teachers and support their marketing more than anything else. Okay. Support their marketing. I think what I would take it would be from the teacher education perspective, and I would say
We need to have that teacher autonomy, not only in terms of content and pedagogy, but also to empower and let the teachers play an important role in innovation. And that has to begin with teacher education institutes, because we will be not only able to connect with the pre-service teachers, but also with the schools during our internships, and thereby supplement and help the school teachers. This I would draw an example because during the pandemic, the department had to go in for internships because we run a 2-year program, and we made sure that students would be able to graduate from the program. And the schools were more than willing to have our interns, because the interns here at my department were empowered to use technology. It was not that they would use a package. They would be equipped with edtech tools so that they would be able to support a teacher back in school. And these teachers were supported by the youngsters, who were more than willing to experiment, who were willing to take failures, who were willing to take back what the teachers had to convey to them. And the schools were also able to look at the different forms of assessment, apart from the approaches to teaching, approaches to learning. And I would strongly say that continuous professional development is the in thing. It is not that we borrow and help the students, help the teachers to say this is what needs to be implemented. But we need to empower them through workshops, through seminars, so that they would be able to experiment. And it has to be research-based learning. Yeah. So I know a lot of your work is in this area in terms of how do you, so agency was a question that was asked even earlier as to how much agency do you give, especially in a world in which you don't know what the answers are, how much agency should you give to teachers? Yeah, sorry, go ahead. Sorry, I can't help reacting to that. Please. Because I have a small problem with that question. It is not about how much agency do you give. I mean, teaching is a profession, means that teachers have agency and autonomy. That's the core of a profession. I think the only thing one can do as a system is, okay, yes, there are certain boundaries to that agency. So for example, corporal punishment is not allowed, is an example of a boundary. But I don't think a system needs to get out of the mindset of saying that we are giving agency to a teacher. We need to stop taking it away. Padma, you were coming into the conversation. Just a couple of things. One is that I just wanted to first respond to this question of how we use technology for teacher education and I think we need to recognize that especially in-service teacher education, professional growth is a social process. It's not about absorbing content. Okay. It's not even about learning ideas and applying them. It's really about being in a professional community and the learning being supported in a social manner. And we have found that communities of practice are really important. And technology enables us to overcome the physical boundaries when we build communities of practice. But these have to be authentic communities in which members of the universities are there with school teachers. And I would certainly say that a DTEA must be building these communities of practice between the university and the school teachers. Could you give me an example of what could be a community practice? Is it like 8th standard geography teachers? It need not be 8th standard geography teachers, but certainly geography teachers in middle and high school. And building communities of practice around subject teaching interests makes enormous sense. It doesn't mean that everybody has to be teaching the same thing at the same time for the community to make sense. But the issues and the experiences that are exchanged immensely then may begin to make sense. But I think we should also be looking at communities of practice around areas that very often teachers don't want to engage with upfront. For example, how am I going to get more girls in my classroom to ask questions? How am I going to ensure that I have individualized learning for inclusive classrooms? Very often, so teachers automatically respond to subject identity-based communities of practice, but we need to find ways of also furthering these issues around which the quality education for all question is going to be achieved through these. But I think this is it has enormous potential. In the work that we do in the center, we have found it to be tremendously productive. And I would say that we should be thinking about innovating with these kinds of modalities. Another constituency which is very neglected in the Indian context is the newly qualified teacher. And I think we should be paying a lot of serious attention to this.
between preparation in the university, no matter how immersive it is, and getting into your job, the initial years are very, very crucial. And over the world, it has been recognized that the support for this group is very, very important. Of course, in India, we don't have the problem of dropout, but still there are huge, No, but it is emotional dropout from the profession, yes. right? And it's also, I You're mean, physically there, but emotionally you're... And collegiality during this phase is central to the teacher's own ability to feel her professional identity. So we've been finding in our research that teachers' professional identity gets built, but it gets threatened when they enter into the school because there isn't a system that is supporting it. It's not important that this professional, the newly qualified professional support is school-based. It could even be outside the school, and probably that's a good thing. But I would certainly say that DTE should be thinking about it. When we recruit our teachers in, it's not giving induction programs and gyan. It's building the structure of a community which supports teachers. And I think we should be doing that. With regards, what could really change the game? Are we going to wait for a generation to have the same discussion? I would say we need not wait for a generation. But that means we just have to take a much more systemic approach to what we do. Okay. If we're just going to rely on teacher education to produce the change, it's not going to happen. Equally, we need to make sure that schools in their recruitment begin to look for quality teachers. And we need to think, where are the graduates of our program getting employed? Government recruitment happens once in a while. It's not a steady way of, person graduates and they know that they're going to get into for many years they have to work with private schools. Yeah. How can we ensure that private schools select and value good teachers and make that the selection criteria? I think we need to work on that. I would really be impressed the day when the private school teacher says, come to my school because these are the teachers I have. And that's a part of the advertisement that they give, not their classrooms and their playground alone. When the teachers of the school begin to be the reason why the private school is confident about what it delivers. So I feel we need to work on this environment. And I think as an institution, we should build these bridges. And we should enable them to see that there is value. I actually find that very often private schools are a bit threatened by these words autonomy and, criticality. They want good workers. They're not necessarily looking for these things. But we have to, I think, find a way of persuading them that this is not threatening. This is actually professionally very good if you can value your teachers for that. And I think we should look at some of these little pieces. And I'm hoping that even within government, we're going to evolve a system by which we recruit teachers to school, not just into a cadre. I think when teachers, it doesn't prevent teachers from moving to school, but I think the core belongingness to the institution, developing that community within the institution will go a long way to strengthen. So I'm really thinking more that we have to enhance the visible value of the profession. And then I think a lot of things will begin to happen in a very cohesive way. Then you can accelerate and hopefully... And many more things will begin to. The logic of the university will find its confirmation only when we are able to connect it to the employment and effectiveness piece in the classroom. Connecting several dots there. Yeah. Yes. Ashwad. Yeah, I'd like to add to that, especially on her point around, what are systemic solutions? Because I agree, communities of practice, these are things to see examples, but when a university is, looking at 10,000 teachers, how do they do that? And how do they make it effective, right? My assumption is there are two big mindsets that needs to change primarily. One is what Ms. Greta was talking about, where it's not just pre-service education. Teaching as a profession is seen that we'll pack everything before you become a teacher or get an idea of your classroom. Let it be foundational literacy, let it be child psychology, let it be now coding, anything. We'll keep putting everything in there and then you're set to do it on your own. I think that mindset has to change. That's one. Second is also to think about what are we celebrating as teachers? Like to her point as well, I'm completely on board in looking at teachers as champions, superheroes. But I'm also a little worried about, what happens when that goes to an extreme, like you see in coaching centers. It runs completely on the face of the teacher, but are those the kind of teaching or teaching practices to the larger purpose of education and, social connect? Is that what we want to celebrate, right? And so when I'm thinking about it, what is it
Like when we go to a school or classroom, I always ask myself, is it rocket science to have a decent functioning school or a classroom? If it isn't rocket science, what are those essential things it is? Right? Maybe more than rocket science, from what I agree that it could be in the depending on how much depth you want to go into in each one. Of course, it changes. I think this is more in a figurative sense of saying that while a teacher is important to be focusing on n number of things, what are few things which are the most important, right? Like, what is the teacher's sense of possibility and belief about her students? Does the teacher look at themselves as a reflective practitioner? Do they bring in a certain sense of an action research in their work? Are these certain mindsets, orientation that we can kind of all commit to as an ongoing basis? Then a lot more ideas will follow, Aditya. I think there are a lot of things such as exchange programs. Now they're talking about mentoring. There are a lot of ways beyond school and just training where we can look at how do you build exposure, how do you change vantage points for teachers to also have that development. So certain habits of mind almost you're talking about that you need. So whether you do more branding, more innovation, more habits of mind, more communities of practice, different ways of accelerating this space, otherwise we'll be having the same conversation 20 years from now. I'd love to open it out to the online as well as the offline group. This has been a rather engaging discussion. Maybe we'll take 3-4 questions and then sort of toss it around amongst ourselves. Hanji, please. उनको माइक दे देंगे प्लीज. हाँ जी. हेलो. हाँ जी. मैम, मेरा सवाल रम्या मैम से है कि आपने मार्केट को एक इम्पॉर्टेंट फील्ड बताया जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, तो मतलब मैं अपने अनुभव से समझूं तो मुझे लगता है कि गवर्नेंस और एजुकेशन को मिलके मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, उसको डीकोडिफाई करते हुए. जैसे आपने कहा कि बेस्ट स्कूल्स या बेस्ट टीचर्स को आप हाईलाइट करें, उनको प्रमोट करें. तो जैसे मैं एक अध्यापक के रूप में अपने लिए समझूं कि मेरे लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, मतलब जिन इंस्टीट्यूशंस के साथ मैं काम कर रहा हूं वो मेरे साथ किस तरह का रिवॉर्ड या किस तरह का रिकॉग्निशन, जो ग्रोथ आप कह रहे थे, वो उसको अगर मैं समझूं तो मुझे तो ये लगता है कि जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं काम कर रहा हूं उनको एम्पावर करने में मैं किस तरह का रोल प्ले कर रहा हूं. तो यहाँ पर मेरे लिए एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन आ रही है कि मुझे हमेशा लगता है कि मतलब मार्केट को हमें डिकोडिफाई करना है एजुकेशन के माध्यम से कि तो आपका प्रश्न क्या होगा? तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ही मेरा ये है कि कहीं ना कहीं इस वाले स्टैंड में लेयरिंग इन पब्लिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ज़्यादा हो जाने की संभावनाएं दिखती हैं मुझे. तो अगर मैं गलत हूँ. क्या इन पब्लिक स्कूल सिस्टम? लेयरिंग, अलग अलग मतलब लेयरिंग, कुछ बेस्ट स्कूल्स, लेयरिंग. हाँ, एक सरकारी तंत्र में 5 तरीके के आप स्कूल देखेंगे. ये स्कूल्स आ गए हैं, ये आ गए हैं, ये आ गए हैं. तो होता क्या है कि जो बेस्ट स्कूल हैं वो मास के रूप में काम करते हैं उसका, कि जो उसकी जो मासेस में जो बड़े संख्या में स्कूल हैं. शायद आपका प्रश्न थोड़ा समझ में आ गया अभी. हाँ जी. एक और प्रश्न कहीं और पे था. 2-3 प्रश्न ले लेते हैं फिर साथ में कर लेते हैं. हाँ जी. सभी लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में रखेंगे अपने प्रश्न को. हाँ, ज़्यादा भूमिका नहीं बनानी है. सॉरी. एक्चुअली प्रश्न भी है, थोड़ा बताना भी है. जैसे टीचर क्वालिटी बढ़ानी कैसी है, एक मोटा मोटा पैनल से ये निकल के आया है कि टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे आसानी होगी पढ़ाने की. वो एग्री करता हूँ टेक्नोलॉजी से इट वुड बी बेटर, मतलब थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, थोड़ा इमेजेस दिखा के हम थोड़ा स्कीमा बच्चों का अच्छा कर सकते हैं. बट अगर आप अच्छी चीज किसी ना समझ को दे दो तब भी उस अच्छी चीज का कोई उपयोग नहीं कर सकता. तो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि टीचर को बनाओ, मतलब टीचर को एक्चुअल में टीच कैसे करना है या उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, वो उस पर फोकस करना चाहिए. जैसे मैम भी थोड़ा उस बात पे थोड़ा फोकस कर रही थी कि वी हैव टू इम्प्रूव टीचर्स. अब देखो टीचर एक्चुअल में होता क्या है, असल टीचर वो होता है जो. आपका प्रश्न है कि आप पैनल पे आना चाह रहे हैं? पैनल पे थोड़ा बता, क्योंकि वो पूछ भी रहे हैं ना, वो भी खुद डाउट में कि क्या टीचर को बनना चाहिए, क्या टीचर के टेनेंट्स होने चाहिए. सर यही पूछ रहे थे कि एक्चुअल टीचर के टेनेंट्स क्या होने चाहिए. तो हम टीचर एजुकेशन में पियाजे के बारे में पढ़ते हैं. पियाजे कहते हैं कि बच्चों का स्कीमा हमें सेट करना होता है तभी उनकी नॉलेज बढ़ती है. ठीक है, जिन्होंने पियाजे के बारे में पढ़ा होगा. तो एक टीचर का मेन फोकस होना चाहिए कि उसको बच्चे का स्कीमा कैसे इंप्रूव करना है वो समझना होगा. मैं उत्सुक हूं आपके प्रश्न सुनने के लिए. मैं बताता हूँ.
मैं बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं टीचर क्वालिटी बढ़ानी कैसे, मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ. क्वेश्चन आप समझ लीजिए उसी पे आता है कि टीचर क्वालिटी बढ़ानी कैसे, मेरा क्वेश्चन वहीं पे आता है. ओके, थैंक यू. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ. ठीक है, वो थोड़ा मुझे जनरल प्रश्न लगता है, उतना स्पेसिफिक नहीं है जहाँ पे नहीं, कुछ. चलो कोई बात. हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. माइक ऑन कर लीजिए. या, थैंक यू. कैन आई गो? हाँ जी मैडम, आप पूछ रहे थे. मैं अच्छा, हाँ जी. हाय, माय नेम इज अनुभव. आई हैड 3 पॉइंटेड क्वेश्चंस. वहाँ पे मैडम को दे देंगे प्लीज़ माइक्स. वहाँ पे 2-3 महिलाओं के पास माइक्स नहीं है. हाँ, प्लीज. Right. So Rita, may I go ahead? A pointed question for Ramya madam. Ma'am, you mentioned about merit about teachers, right? How do we create a merit system? Can you elaborate more? Because in service training, merit right now, as far as my understanding is through APARs. But what is the other format of merit that you are suggesting here? And there could be certain detriments also, which I can now think of, but we need to sort of discuss that. Okay. Second, for Ashwad, I had one more question. Do you think we need a policy for digital pedagogy now? Because there is a lot of experimentation happening, a lot of apps coming from different institutions, and everybody is trying their own mechanism of doing things. But where is a central guideline for teachers? Because there's always trial and failure mechanism happening, but not leading to something concrete. Thank you. Just one more, sorry. नहीं, दो बहुत होंगे, बहुत सारे दूसरे जन भी हैं. थोड़ा प्रायोरिटाइज करना अच्छा ही होता. नहीं, प्लीज. थैंक यू. Yeah, so maybe we'll just take these 3 questions that came up. Ramya, there were 2 questions to you as far as I understand them. One is, will merit based not result in layering? And 2, as I understood it, was apart from APAR, are there any other ways in which a teacher merit can be apart, the annual performance? Yeah, so see, this is a I think a very fundamental philosophical question. I think most of us, when we enter any profession, most likely to begin with, हम लोग for the profession क्या करना है, उसका outcome क्या है, वो achieve करने के लिए hopefully enter करते हैं. जैसे कोई टीचर बनता है, टीचर बनती है तो उसको बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है. कोई इंजीनियर बनता है, इंजीनियर बनती है तो उसको एक अच्छा ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनाना है. यू आर फोकस्ड ऑन द आउटकम. हाउएवर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई होप द पर्सन हु आस्क्ड द क्वेश्चन, दिस रिमेन्स योर मोटिवेशन थ्रू योर लाइफ. आई विश यू दैट. बट इन रियलिटी, फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, what happens is that you are also looking for some external validation. ये एक normal human tendency है, and this we have done very large scale surveys of teachers where teachers are voting with their feet saying, yes, I'm looking for recognition, I'm looking for career growth, etc., etc. And this brings us to the other point, which is, does recognition always mean कि आपके अपार में आना चाहिए, आपको फिनेंशियल रिवॉर्ड होना चाहिए, या सिस्टम से उसकी वजह से लेयरिंग होना चाहिए? नॉट नेसेसरली. इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के साथ ही कुछ साल पहले हमने एक कोलैबोरेशन किया था जहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की एक टीचर, उनको नेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिला था. हमारा एक एनुअल एक कंपटीशन होता है जिसमें उनको नेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिला था. वो पैनल पे बैठे हुए थे उस दिन, एंड उन्होंने एक बात बोली विच आई कैन नेवर फॉरगेट, एंड आई हैव हर्ड दिस अगेन एंड अगेन आफ्टर दैट फ्रॉम मल्टीपल टीचर्स, दैट व्हेन शी सिट्स एट द डिनर टेबल विथ हर फैमिली, उसके पहले उनके भाई बहन के प्रोफेशंस के बारे में सब लोग बोलते थे, ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनके बारे में बोलते थे नहीं ये तो सिर्फ टीचर है. बट आफ्टर दैट रिकग्निशन, हर पेरेंट्स स्टार्टेड सेइंग शी इज अ नेशनली रिकग्नाइज्ड टीचर, और फॉरगेट नेशनली रिकग्नाइज्ड, शी इज अ टीचर, एंड स्टार्टेड गिविंग वैल्यू टू दैट. That is the simple external validation that makes a difference also. In addition to that is layering, right or wrong. Without getting into too much detail, I will simply say that in the private school space, layering is there.
It is a fully layered system. Now, unfortunately, today, in the general market perception, the government schools are sort of at the bottom of that layered system. We need to change that perception. I mean, Delhi government is one of the governments changing that perception. We need to change that perception. That perception is very difficult to change for a system as a whole. But if you tell me, हाँ, ये वाला एक particular school है, जो बहुत बढ़िया school है, government हो, private हो, फर्क नहीं पड़ता है. That's how you start changing that profession. Layering is part of the market. You can't avoid it. It's about how do you make it aligned with quality rather than कि जिसके पास पैसे है उसने अच्छे से अपना layering ऊपर कर दिया. पद्मा, आप भी कुछ बता रही थी इसके बारे में. I wanted to say that, you know, part of the problem of this need for recognition is because this profession currently has a very low status. थोड़ा पास में रखें. Yeah. And that creates this, that until then nobody talked about you at the dining table. And it takes this, but then you can only have so many national awardees. But how do we bring that into the dining table, I feel is really the core of the issue. I'm really concerned, however, that we apply performance management kinds of approaches where it concerns teachers. And I think as we devise systems for recognition, we should be very careful that we are doing it with teachers, by them, and not somebody else sitting outside deciding the metrics. Yeah. I mean, the profession recognizes itself. Why should somebody else recognize the profession? It has to be given by the profession to itself, authentically. That is when it's truly a profession, and right? that's when it's a professional recognition. Otherwise, you're always dependent that somebody outside will come and speak to me, and only then I will feel recognized. Yeah. That really tells us some of the problems of where we are today, and what we need to strive for. And we should be very careful that we don't get pulled into performance management. I think it's going to, in the long term, reduce both the imagination of teaching and what we will do in our classrooms. आलोक जी बहुत नर्वस लग रहे हैं. बहुत सारे सवाल लोग हाथ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है. हाँ जी. तो उसके लिए अब हमें यहाँ रुकना पड़ेगा. और एक टीचर के तौर पे मेरे से भी कोई पूछे कि कौन सा दिन सबसे बेहतर होता है मेरे लिए, तो जिस दिन टीचर्स के मुद्दे और इश्यूज पे बात हो रही हो वो सबसे बेहतर है. तो हम लोग तो चाहते हैं कि ये वार्ता चलती रहे, पर अब चूंकि समय का अभाव है तो एक बहुत बेहतरीन इंटेलेक्चुअल पैनल चर्चा के हम सब भागीदार बने, सुना. उसके लिए मैं सभी पैनलिस्ट को, मॉडरेटर को शुक्रिया अदा करता हूं. साथ ही आदरणीय वीसी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देकर हमारे सभी अतिथियों का यहाँ पर सम्मान करें. प्लीज सर. इधर आज प्रोफेसर पद्मा सारंगपाणी मैम, अश्वत जी, ग्रेटा डी सूजा मैम, रम्या जी, शुक्रिया आप सबका. तो अभी हमारा बैक टू बैक दूसरा पैनल डिस्कशन भी स्टार्ट हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स. तो आप लोग कहीं जाइए नहीं. और जितनी मुझे लगता है समृद्ध करने वाली चर्चा ये रही, उतना ही हमारा अगला पैनल डिस्कशन भी है. तो अदिति. So we can hold on to all the curiosity, all the questions, because just as engaging as this panel discussion was, we are moving on ahead to our second panel discussion. But we will not forget to take the nuggets from our first discussion, which say that we have to build bridges in our institutions so that we can add value to our teachers. We have to help teachers have their horizontal and vertical growth so that the teachers feel empowered, whether it is through the teacher's autonomy or it is through the continuous professional development that is provided to teachers, so that they can carry out the researches in their respective fields and help escalate the progress in the schools.
Because after all, let's celebrate that teachers are heroes without capes. Moving on, our next panel discussion talks of laws and the new education policy 2020. How aligned are we? Very shortly, we'll have our panelists on board. And as educators, we found that the first session was really insightful. There were a lot of triggering moments which we felt that, yes, this is something which we've often thought which should be addressed. And finally, today is the day. The panel that we have now shall deliberate and discuss the provisions of the new education policy 2020 intertwined with the state and national laws. It aims to bring in policy makers, educators, researchers, administrators of distinct states within India and share experiences in implementation of various provisions of the new education policy 2020. Subsequently, it shall serve as an attempt to meticulously understand the legal loopholes. Yeah, you've heard it right. The legal loopholes which are hindering the implementation of this policy. So presenting the second panel discussion on laws and NEP 2020, how aligned are we? So the panelists for the second panel discussion, we have the first panelist, Mr. Shailendra Sharma ji. Sir is the Principal Advisor to Director Education in Delhi Government. He has been closely associated with working of the Delhi schools and has been instrumental in planning and execution of all the education reforms Delhi has seen in the last couple of years. His work is intricately linked with the shaping and steering of the public school systemic reforms. He has worked as an educational practitioner in Pratham for around 20 years to improve the quality of education in India. Sir is also part of the Education Policy Network of Salzburg Global Seminar. Our second panelist is Ramya ma'am, whom we had a lot of questions from, and since ma'am talks of the pioneering several on-ground reforms in both school education and skills in India, we will still have a lot of questions that we'll put up to ma'am. Ma'am, welcome again. Our third panelist, it seems the energy is getting slightly low. Is it? Thank you. Our third panelist is Praveen sir, and Praveen sir leads the strategy office of the Convergence Foundation, an organization working on setting up new organizations focused on economic development and improving talent in the social sector. Prior to this role, sir worked with the Central Square Foundation, where he worked closely with the Government of India on the implementation of key strategic projects and scaling up successful practices from NGOs and the government. Sir is a Young India Fellow and a Teach for India Fellow as well. It's a proud privilege to have our panelists on board. And for this session, we have a very special moderator, Mr. Anurag Kundu sir. Sir, thank you so much for coming. We got to know that sir was not well, still he could make it. That's really very nice of him. Sir is a chairperson of DCPCR, Delhi Commission for Protection of Child Rights, Government of NCT Delhi. He's responsible for monitoring the implementation of children's rights, overseeing rights violations, commissioning research studies, and advising the government on policy matters. Prior to this, Anurag sir was a key member of the team that conceptualized and implemented the nationally and internationally acclaimed education reforms of the Delhi government. Honored to have esteemed people on board and looking for a great session. Sir Anurag sir. One reason for low energy often is that the four of us are between you and your lunch. So it's a difficult situation to be in, and it's compounded by the fact that we are not only between you and your lunch, we are between you and your chutti. So it's a double jeopardy for us. So the onus is on us to make it more interesting, and we'll try to. So let me not waste time. Let me get to the topic right away. And let me start with you, Shailendra. Why are we even having this discussion? Why there's a Right to Education Act in place? All states have their respective education laws. There's a very clearly articulated expression in our policy, a very clear statement of what needs to happen as we move forward and try and achieve education goals. Why do we need to have this discussion on the laws and the policy
when there's a clear expression and a clear policy statement? Well, because it is second Saturday and we thought we don't have anything better to do, so we thought we should have it. So having said that, I would like to quote a sentence from the introduction to the National Education Policy 2020. It says, "This policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goal of 21st century education." Ever since this policy was launched about 2 years back, we have heard several discussions, several conferences, several seminars on different aspects of education policy. But ये वाला जो पहलू है, governance and regulation, इस पे कोई बहुत ज़्यादा चर्चा होते नहीं सुनाई दिया. Now, if you look at this policy, there is 3 things in it. 3 बातें हैं. इसको अगर हमें implement करना है, because that is the theme of this conference, connecting the dots. तो 3 चीज़ें हैं इसमें. इसको अगर हमें implement करना है सही मायने में, तो पहला चीज़ तो एक प्लान की बात है कि there has to be a plan. सेकेंड चीज़ है कि there has to be a budget. पैसा चाहिए बहुत कुछ करने के लिए. And the third thing is a legal framework. So not everything in the policy is about, say, you can do with a good planning, or you can do with more budget, or you need to do, you need a legal support mechanism. But ये तीनों का combination जरूरी है. So उस 66 page के document में we will have to keep deciphering कि for which aspect you will require what kind of intervening action. So for example, अगर foundational literacy and numeracy is a goal और chapter एक पूरा dedicate किया हुआ है, so what probably any government or any system would require is a planning. कि आप कैसे प्लान करते हो, that may or may not require additional resource. पर तो ये वहाँ पे रहा. When you say कि हमें 4 तरीके के early childhood education setup रहेगा, we should have standalone आंगनवाड़ीज and all those आंगनवाड़ीज should have well ventilated room, proper infrastructure and all, that will require money. पैसा चाहिए होगा, fund चाहिए होगा उस चीज के लिए. But when you say that your governance structure has to have a 4-tiered system, where you need to have a Department of Education, you need to have a Directorate of Education, you need to have a state authority, and you need to have a SCRT's role. Now SCRT probably has certain role which is defined in different statutes, but जब इस तरीके का trifurcation या 4-layer का structure आपको बनाना होगा, तो you will have to look into the law. आप existing laws में अगर उनके लिए प्रावधान नहीं है, तो आपको वो लॉ बदलने पड़ेंगे, अमेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते. So therefore the purpose of this discussion is to focus upon that third part, कि where actually law will be required to bring about the vision of the new education policy. So let me take that forward. The revision in the legal framework. And before I start jumping into specifics, for example, of teacher or other aspects of school system, let me bring you in, Praveen. You in your current role and in your previous role have worked with several state governments. Are they even thinking, is there a discourse, is there a discussion that what statutes, what policies, what schemes, what specific regulations need to be aligned to NEP? Are those discussions happening? And if yes, what specific aspects of discussion is there, and what do you see completely missing? Thanks, Anurag. Before I come to the question, I just want to make 2 more general comments, and I'll come specifically to this, right? Pehla, I think everyone has realized that India is too complicated to have one-size-fits-all solution. I think it is easy to say that. It is difficult to internalize it, especially in policy. हमने शिक्षा के अधिकार कानून में भी ये देखा. We talk a lot about diversity, but when it comes to rules and regulations, थोड़ा सा top down आ जाता है. And that's not only from central government to state government, but also from state governments to like your districts and the subnational units, right? Dusra, sometimes to achieve a certain objective, the pathway is not very clear. Partly it could be because itni variation hai,
partly it could also be क्योंकि designs are fundamentally more complicated. तो हमेशा ये सोचते रहना कि इसमें हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या काम करेगा. जहां तक बात है बिटवीन द NEP एंड द लीगल, एंड जैसे कि शैलेंद्र जी ने भी बताया व्हाट आर द लीगल ऑब्स्टिकल्स, इसके बारे में चर्चा हो नहीं रही है. शिक्षा के अधिकार के कानून के समय भी ये चर्चा नहीं हुई थी. हमने उस समय तो हमने कानून ला दिया था, दिस इज स्टिल अ पॉलिसी इंटेंट. उस समय तो हमने कानून ला लिया था और हमने रेगुलेशन के बारे में एज अ कंट्री हम कभी बात नहीं करते. मोस्ट ऑफन देन नॉट वी थिंक ऑफ रेगुलेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट स्कूलिंग, और उसमें भी प्राइवेट स्कूलिंग में वी इक्वेट दैट टू फीस को कैसे रेगुलेट करना है या फीस बढ़ोतरी हो रही है उसके बारे में सरकार क्या कर सकती है. आई थिंक शिक्षा नीति में देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट एटलीस्ट देर आर 3 पॉइंटर्स जिसके ऊपर हर राज्य में इस तरीके की चर्चा होनी चाहिए. पहला कि शैलेंद्र जी ऑल्सो एल्यूडेड टू दैट इज बहुत क्लियरली कहा गया है कि द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ प्रोवाइडर, जो डायरेक्टरेट का काम होता है, एंड एज अ रेगुलेटर, जो इतना बड़ा आपका प्राइवेट स्कूल नेटवर्क है और सरकारी स्कूल तंत्र है, उसको रेगुलेट कैसे करना है, इसको आप डिसोसिएट कर दीजिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सेटअप इन द कंट्री. दूसरा इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन स्कूल गवर्नेंस का. अभी आप सारे के सारे नॉर्म्स देख लीजिए, जैसे आप शिक्षा का अधिकार कानून ले लीजिए एंड इवन द दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट, मोस्ट ऑफ द नॉर्म्स आर स्कूल बेस्ड नॉर्म्स. हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां के 10 लाख सरकारी स्कूलों में से 7 लाख ऐसे हैं जिसमें 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम NEP हैज रिकमेंडेड दैट यू थिंक ऑफ कॉम्प्लेक्स एज अ गवर्निंग यूनिट. अगर आपको यह करना है तो आपको अपने कानून में देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है. और तीसरा इज द कॉन्सेप्ट कि जो स्कूल की ट्रांजिशन का पीरियड रखा है कि आप पहले 5 साल के अंदर हैव समथिंग फाउंडेशनल, देन हैव मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल. इससे शिक्षा तंत्र के अंदर नॉट ओनली एजुकेशन डिपार्टमेंट बट अदर डिपार्टमेंट विच आर कंसर्न्ड स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड, उसका क्या रोल होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन तो अभी नहीं हो रहा है. Since there is no discussion happening, that to me is even more worrying than the discussion going in the wrong direction. But you spoke about essentially separating the function of administration from the regulation. You also spoke about that education laws need to fundamentally look not only a school as a unit, but a school complex as a unit, and what implications that has on different laws. So let me now start going into specifics, and before we head into this aspect, let me start with the most important unit of teachers. Ultimately, teachers are the ones who will have to deliver or who deliver the education in the classroom. And Ramya, this is essentially your forte. The NEP in its specific section talks about career progression. It talks about better recruitment mechanism. It talks about promotion policy. It talks about different ways of career progression, very lateral, horizontal, vertical. But all of that, at the end of the day, requires changes in recruitment rules. If my recruitment rules are the same, we may go on discussing whatever we want to go on discussing about the policy. Ultimately, मेरे appraisal report में जो लिखा जाएगा और एक certain regulation है, मैं उसके हिसाब से promote होऊंगा या नहीं होऊंगा. So what broad changes do you see about the need for recruitment rules changes, and do you see governments either thinking or already making progress aligning to the new education policy? Ramya. Of course, पिछले पैनल में मैं टीचर्स के बारे में बहुत बोल चुकी हूँ, so maybe I'll talk a little more broadly also now. So I think just before I answer that, overall I feel in the new education policy, there are 3 very fundamental changes which probably require legal framework or which touch the legal framework. And of course, Shailendra ji and Praveen already spoke about the governance side of it. Now, from the pedagogical outcome side of it, one fundamental change is the change in the board exam. So how can your school leaving exams be aligned with what the world of work or the world of higher education requires? That is a very fundamental change in NEP. That very likely requires changes at the legal framework level, and there are states already
thinking about this or doing things towards this. Second, the whole idea of integrated and multiple paths. So when we talk about this, 4 plus 3 plus whatever, 5 plus 3 plus 3 plus 4, we are overly focused in discussions on just those compartments. But the theme behind that is to say that as a student, I should be able to move around. So when I'm going from, say, 9th to 12th, I should not be put as science, commerce, arts alone. I should be able to move around. I should be able to drop out and come back. When a university is giving a degree, it can add up through credits. So all of those elements, the movement is the second big thing. Third, of course, as you said, the whole idea of teacher career growth and progression, etc. So I see all these three things as very fundamental things in the policy. Coming to the third point, yeah, we are already seeing states actually implementing some of this. Now, the way implementation happens, it's twofold. एक चीज़ हो सकती है कि आपने law ही बदल डाली और उसके basis पे आप implement कर रहे हैं. Now, very often that's not a direction that is very practical or which gets broader acceptance. So the direction we are finding a lot of states taking is आपने positions identify किए system में which are going to be very crucial positions for the overall quality of the system. And for these positions, you are passing a policy saying that, yes, my selection framework will include this many points from this mechanism. So for example, Andhra Pradesh took around 3,500 resource person positions across the state which impact quality and said that yes, for these positions we will go through a competency based assessment of the teacher's skills, etc. to select for this. Haryana has actually now looked at multiple positions across their model schools, special education cadre, their contract teacher cadre, etc. to say that for all these positions we will use merit based selection by giving this much weightage to it. It does not change every teacher's annual performance review. So it doesn't mean कि हर teacher के अपार में change आ रहा है and उसमें कुछ डाल रहे हैं. No, they are not doing that at all. But अगर आपको उस position के लिए apply करना है, then yes, you are going through the merit-based selection and that becomes a starting point towards change in recruiting rules in the long term. And that's the direction we are finding multiple states taking now. Same thing, for example, talking about board exam, right? I don't think states are directly saying, मैंने board exam बदल दिया. But for example, Tamil Nadu has started a very large initiative of saying, how do I empower teachers to ask a different kind of question in their classroom? And the idea is that 3 years from now, 5 years from now, when teachers are comfortable asking more and more of those kinds of questions, then you also start seeing those kinds of questions in your board exam papers, etc. So these are some of the directions. And let me stick with you for a while. Let me ask the same question slightly differently. In our current setup, there is a PRT, who's considered junior most, then there is a TGT, then there is a PGT, and the promotion then of the many options is you can go to DIET. Now a PGT goes to DIET, a postgraduate teacher who's supposed to teach 11th and 12th, trained in teaching in 11th and 12th, then goes to DIET, who training teachers of tomorrow who will teach primary. So this is not a question of a disqualification, this is a question of misqualification. A PRT should be able to go to DIET and then train tomorrow's PRT. Take for example the constant tussle between the B.Ed and BLEd. Till date, depending on states, we still have no clarity about कि BLEd TGT के बराबर है कि PRT के बराबर है. And you will find 10 variations if you ask for 10 states. Take for example further, I'm going one step further. Let's go to Kerala. The NEP says कि transfers नहीं होंगे teachers के except specific circumstances में, और होंगे भी तो academic year के बीच में avoidable है. अब मैं उनका रूल पढ़ता हूँ. उनका रूल कहता है चैप्टर 14th में कि
3 ट्रांसफर हो सकते हैं, तो रूल तो चेंज नहीं हुआ। तो नीचे का बाबू जो क्या करेगा, वो 3 ट्रांसफर कर देगा। NEP में लिखा है, लिखते रहिए, क्या फर्क पड़ता है, कागज में लिख दिया। सो दिस एग्जाम्पल ऑफ misqualification or the example of constant tussle and lack of clarity between multiple degrees, the B.Ed and the B.Led, and the reality of education rules. How are these to be reconciled? Hello, yeah. No, great question, right? So it's not just a tussle between policy and rules. I think this is the fundamental thing about a federal system. कि एक central level पे there is a policy and there is a state level view of implementation, etc. And education, as we are all aware, has moved from being a state subject to being a concurrent subject, which makes it further complicated to say that what is it that the center can prescribe and what is it that states have flexibility to decide or not decide. And that's a constant thing that keeps coming up. Now, what we find on the ground, however, is that if a state government wants to make that change, they find a way to pass a policy. So जैसे किसी state government को अगर बोलना है कि हाँ, I will have a few positions in my diet which are for PRT or TGT, it is not impossible. It is something that a state government can do without changing the entire legal framework. That is the whims and fancies of specific people in power. Correct. That is still not the statutory framework that should be followed as a norm. Yes, though when you look at India as a country across sectors, and this is not true just for education, right? It's true across sectors, that very often the whims and fancies of various people is what starts a certain set of changes, and then it gets institutionalized by the legal framework. So I don't see per se anything wrong, or rather it is probably the practical answer कि किसी officers ने जैसे let's say Delhi government or DTU takes a few steps that okay, these are the changes we are going to make, and are doing that at the policy and office order level, and legal framework follows. And it could also be the other way around, that in some cases the legal framework is there first and then your implementation follows. But I don't think we can always wait for that perfect answer. Shailendra, yeah, go ahead. Just one, I think, not maybe a comment on the discussion, right? I think when we talk about the legal frameworks, in some of these questions, it may be just useful to go to the first principles and say कि हम किस चीज़ के ऊपर we are having a at least a discussion or disagreement on. अब जैसे मैं केरला का रूल पढ़ूँ, right? I think while you can discuss कि टीचर का 2 ट्रांसफर होना चाहिए, 3 ट्रांसफर होना चाहिए, but the question that arises is, should teachers be a state level cadre or should be a school level cadre? Because RT was very clear, teachers were supposed to be a state level cadre. RT के जब पहले डिस्कशन में there was ये कॉन्सेप्ट आया था कि टीचर्स को rather than state government trying to recruit, let each school be able to recruit and teachers will be aligned to that. Now there are pros and cons of both the approaches, right? But leaving that discretion a little bit on the states to say, आपके rural areas के अंदर conditions may be very different than state government. Your legal framework should enable, once you make that decision, the transfer becomes immaterial. क्योंकि if I have the control over a particular group of teachers, transfers will ultimately happen, right? So the question is not whether transfers should or need to happen. Of course, transfers will, for genuine reasons, also be required to happen. The question is if it can be used as a tool which disrupts education. That's the question. And then what legal safeguards can be put in place to safeguard it from their use as a tool. Well, let me come to specifically Delhi, because that's where we happen to be. What does Delhi stand to lose by not amending Delhi School Education Act? Or a part question is, where has Delhi School Education Act stopped you from doing whatever reforms or the good things you want to do in your schools? And if you can explain with 1 or 2 examples. So, well, because so far, the Delhi government is in news for its education reforms on almost all days.
जैसा clearly you're doing it. Why do you need to amend it? जैसा हमने कहा कि हर चीज़ के लिए आपको लॉ की ज़रूरत हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. बट लेट मी बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन गो अ लिटिल बैक. जो रम्या ने जिस बात को कहा कि सी एजुकेशन वॉज a state subject before it became concurrent subject in 74 or 76. तो बहुत सारे प्री एग्जिस्टिंग लॉज हैं, और जब दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा इस चीज़ को, हमें लगा दिल्ली की समस्या है ये, और दिल्ली में बड़ी सारी समस्याएं होती है, तो एक और समस्या है ये. बट देन वी रियलाइज कि बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात बहुत सारे स्टेट्स की है कि यू हैव प्री एग्जिस्टिंग लॉ जिसके तमाम सारे प्रोविजन या तो ऑब्सोलीट हो गए हैं, बट वो स्टैच्यूट में तो है, और अगर आप लॉ को अलाइन नहीं करोगे with a new policy, new things coming, तो उसका मतलब नहीं है, फिर लॉ की सैंक्टिटी खत्म हो जाती है. I'll give you example of say गुजरात एंड पंजाब. गुजरात ने अपना जो एजुकेशन एक्ट बनाया था, गुजरात कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट 1961, और पंजाब ने बनाया था पंजाब प्राइमरी एजुकेशन एक्ट 1960. बड़े इंटरेस्टिंग फीचर हैं इसमें कि इन दोनों स्टेट्स में प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी बनाया गया था. 2009 की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि व्हेन द राइट टू एजुकेशन एक्ट केम, आई एम टॉकिंग वे बैक टू 1960s, अर्ली 60s में ये स्टेट, इनके अलावा और भी कई सारे स्टेट हैं विच मेड कंपल्सरी, एंड द कंपल्शन वाज ऑन द पेरेंट्स, गार्जियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. 25 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती थी पेरेंट्स के ऊपर अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हो. 1960s की बात कर रहे हैं, ठीक है. वो आज भी स्टैच्यूट में है, या तो 25 रुपए से बढ़ा दो और या उसको हटा दो, या उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना. सो सिमिलरली पंजाब का एक 19 इसका एक्ट है 1960, पंजाब, हाँ, उसमें पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट एक्ट 1998. उसमें क्या प्रावधान है कि जो भी शराब की बोतल पंजाब में बिकेगी उस पर 10 रुपए का सेस लगेगा और वो एजुकेशन के लिए जाएगा. तो ये सारे प्रावधान है. सो देयर आर दिस लॉ दैट एग्जिस्ट. ऐसे ही रिसर्च किया जा सकता है और भी बड़े सारे स्टेट्स में. अब कमिंग स्पेसिफिकली टू दिल्ली, द पंजाब शुड हैव बीन अ वेरी रिच स्टेट. इट शुड बी. पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए फिर वहां पे. सो कमिंग स्पेसिफिकली टू दिल्ली, नाउ दिल्ली स्कूल एजुकेशन इज गवर्न्ड बाय दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973, और 1973 के बाद से लेकर के आज तक यमुना में बहुत पानी बह गया है, कई बार सूख भी चुकी है, बट वो एक्ट इज अ गाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क. सो वन स्पेसिफिक प्रोविजन इन दैट इज दैट द एज ऑफ एंट्री टू स्कूल. एज ऑफ एंट्री क्या है? 5 साल की उम्र में बच्चे का क्लास 1 में दाखिला होगा, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के साथ जो कमेंसरेट रूल है उसके अनुसार. नाउ राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया 2009 में, तो इट शुड हैव बीन लाइक 6 साल, 6 से 14 की हम बात कर रहे थे, 6 साल में क्लास 1 शुरू होना है. बट हम आज भी 5 साल की उम्र में दिल्ली में बच्चे का दाखिला करते हैं, ठीक है ना. एक तरफ हो जाए ना, या तो 5 में करें या इसमें करें. सिमिलरली जिस संदर्भ में वो एक्ट बना हुआ था, बहुत सारा चीज उस वक्त ये था कि हाउ डू वी रेगुलेट द प्राइवेट स्कूल्स. अब आप न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब आप बात कह रहे हो, रेगुलेटरी फंक्शन पे जब आप जाते हो, स्टैंडर्ड सेटिंग और एक्रेडिटेशन की बात आप कर रहे हैं, तो द विजन हियर इज कि चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, एक सर्टन स्टैंडर्ड है जो दोनों को फॉलो होना चाहिए, एंड देयर इज अ बॉडी which should oversee that is being followed. Now there is a conflict of interest in case of Delhi कि the Directorate of Education अपने स्कूल भी रन करता है और वो प्राइवेट स्कूल को रेगुलेट भी करता है रिकॉग्नाइज करने के बाद में. ये सारे फंक्शन एक ही बॉडी में निहित हैं, इनफैक्ट एक ही ऑफिसर में निहित हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है कि इसके लिए आप अलग अलग बॉडी बनाइए. तो जैसा आपने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी ने कह दिया ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है. जब तक आप वो 73 के एक्ट को अमेंड नहीं करते हो, बिकॉज वो स्टैच्यूट है,
उसे पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, उसे जब तक आप चेंज नहीं करते हो, अमेंड नहीं करते हो, दैट विल प्रिवेल, नॉट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये प्रावधान आप नहीं कर सकते हो अनलेस यू गो बैक एंड डू दैट। सिमिलरली जो फंक्शन आज SCRT परफॉर्म करता है उसका कोई उल्लेख मैंने तो नहीं देखा है दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में। इनफैक्ट करिकुलम ले डाउन करने का अधिकार जो है वो डायरेक्टर में ही वेस्टेड है, डायरेक्टर एजुकेशन में। तो फिर किस अधिकार से SCRT करता है? ठीक है ना। सो हाँ, हम ये मान सकते हैं कि बिकॉज राइट टू एजुकेशन एक्ट जब 2009 में आया एंड 2009 एक्ट सेज that there has to be a state academic authority and by notification आपने SCRT को डेजिग्नेट कर दिया। तो you have a two set of things, एक है सेंट्रल लॉ और एक है अगेन दैट इज ऑल्सो सेंट्रल लॉ बिकॉज दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट। तो कौन सी चीज प्रिवेल करेगी? देयर इज अ लीगल कॉन्फ्लिक्ट इन दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड एटलीस्ट फॉर क्लैरिटी पर्पसेस। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में आप कहते हो कि बच्चे जो 5+3+3+4 आपके पास 10+2 का सिस्टम था, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, उसमें भी कोई खास उल्लेख नहीं था। बट आज आप वो 10+2 और अगर हम 2 साल बाय वे ऑफ सर्टन अदर रेगुलेशंस आ गया तो 14 साल की स्कूल एजुकेशन को अब आपने 15 साल में कन्वर्ट कर दिया, 1 साल बढ़ गया। कल को कोई प्राइवेट स्कूल पलट करके गवर्नमेंट को बोलता है जी मैं तो नहीं करूंगा बिकॉज दैट कॉल्स फॉर एन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, तो बाय व्हाट अथॉरिटी द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल बी एबल टू इम्पोज कि नहीं जी आप ये जो फर्स्ट 5 years है जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का है जिसमें से 3 साल जो है वो आपका चलेगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड 2 years इज द फर्स्ट ऑफ द लॉट ऑफ द अर्ली प्राइमरी ईयर्स, उसमें जो 1 साल बीच में घुस गया है विच इज लाइक इधर है कि उधर है, वो कहाँ पे होगा? उस पर अगर कोई स्कूल मना करता है कि जी हम तो नहीं करेंगे ये, तो बाय व्हाट अथॉरिटी विल द गवर्नमेंट बी एबल टू से कि नहीं जी एजुकेशन पॉलिसी कहती है इसलिए आपको ये करना चाहिए। सो ये सारी सब चीजें है एंड दिस इज नॉट दिल्ली स्पेसिफिक, दिस इज लाइक स्टेट स्पेसिफिक। बहुत सारे स्टेट्स हैं तो शायद बाकी और स्टेट्स के केस में तो उनको अपने स्टेट लेजिस्लेचर में पास द लॉ, दे कैन अमेंड दैट, उसमें चेंज कर सकते हैं। दिल्ली के केस में इफ द दिल्ली एजुकेशन एक्ट, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट हैज टू बी अमेंडेड, रिपील्ड और एनीथिंग, Parliament is a body which can do, because in the first place it is the Parliament that created. So it has to be taken note over there. Otherwise ये फिर बीच में ही हमारा कहीं कहीं पे रह जाएगा. So that is the issue at hand. I am not saying कि this can prevent the government or any agency for providing quality education. We have been doing that. But legal clarity भी बहुत जगहों पे ज़रूरी होगी for realizing the full potential of new education policy. You mentioned about the role of academic authority, the SCRT. To the extent elementary education is concerned, the anomaly is remedied by making SCRT the academic authority. But for 9 to 12th, it is still formally the director education. You also spoke about the standard setting authority, the SSSA, that the NEP envisages and bifurcates the regulatory function from the function of administration. So, Kangta, do you see similar anomalies or problems in the government's ability to first create SSSA and then perform the role as envisaged in NEP? And the associated question with that is, now a lot of states, including the national government, are now designating the CBSE or the state board as SSSA. Is that the spirited compliance or implementation of the policy, or is it a checkbox being ticked and the spirit is defied? It's a tough question, right? Because let me ask the latter part of it, which is, board examinations have only one purpose, affiliation, and school leaving examinations, so that a certain standard passes off. Boards usually don't have the capacity to do more in-depth either affiliation of all the schools in the system or think about even remediation, right? If you world over look at India में नहीं, because it requires like a fundamentally very different capacity, but आप UK में Ofsted देख लीजिए. Ofsted they've kept it exactly for this reason completely outside education department, and if I am not wrong, उसकी report UK के parliament में जाती है on school standards. It's not linked to the education department because there is a fundamental concept, there is a fundamental conflict, और कोई अपनी power lose नहीं करना चाहता. That's like a natural human tendency. I think the case of, so from a board perspective, I fundamentally think
it may be an interim arrangement, but you require a separate authority to do that. Also because when a lot of these acts came into being, and also RTE, it didn't take into consideration कि हमारा एक ऐसा स्कूल तंत्र बनेगा जिसमें almost equal children will be going to the public and private system, right? Health में it is almost 70% go to private, the out of the people like going to for OPDs, and 30% go to public. Education also right now is almost 50-50%. So the kind of capacity and capability that you require in a regulator to manage that kind of a system is very, very different. You have to ensure that it is kept separate. You have to ensure that the regulation is designed well. Because I'm butting in, but help me visualize what it separate means. Does that mean one more directorate within the department reporting to Secretary Education? So help me visualize it operationally. No, so okay, there are two ways to do it, right? One is that you keep it completely outside the department and make a separate body which is responsible, say, to the parliament or to the like a state assembly, which monitors all schools and comes up with a report and puts it in the public domain. Just even national education policy, it talks about the concept of transparency, non-intrusive regulation. कि आप चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, आप इनका डेटा पब्लिक डोमेन में रखिए एंड एम्पावर पेरेंट्स टू डिसाइड कि कौन सा स्कूल अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये पीपल थिंक कि प्राइवेट स्कूल्स है तो अच्छा कर रहे होंगे गवर्नमेंट स्कूल से. वी नो फ्रॉम डेटा एविडेंस एटसेट्रा इट इज नॉट. देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम. सो आई थिंक दैट डिबेट समटाइम्स मिसलीड्स कि आप किस चीज़ के लिए रेगुलेट कर रहे हो. सेकेंड कॉन्सेप्ट इज आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है रेगुलेट करने की. अगर एक एग्जाम्पल दूं, आप हमारी टीचर एजुकेशन को का रेगुलेशन देख लीजिए. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन रेगुलेटरी सिस्टम्स इन द एंटायर कंट्री. मोस्ट ऑफ इट हैपेंस इन द प्राइवेट सिस्टम. जो आपके बीएड कॉलेजेस है, मोस्ट ऑफ इट हैपेंस इन द प्राइवेट सिस्टम. आपने रेगुलेटरी नॉर्म्स बहुत सारे लिख लिए हैं विदाउट एनी कैपेसिटी टू इंप्लीमेंट दैट एंड इन्फोर्स दैट. एंड द रिजल्ट सबको पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं. आपकी पार्टी सरकार में आई थी, लाइक उसका कह के. तो इंश्योरिंग की वट एवर रेगुलेशन यू कम अप विद आर इन्फोर्सेबल. डोंट लीड टू थिंग्स फॉर एग्जाम्पल कि हर प्राइवेट स्कूल या हर सरकारी स्कूल उसको तोड़ रहा है. सो नाइदर इट हैज सेलियंस एंड एनीवन हु कम्स फॉर अ इंस्पेक्शन इट बिकम्स अ इंस्पेक्टर राज. सो at least from my perspective, having a body which may be reporting to the secretary, not to the directorate. Second, ensuring that at least proactively you put all the data of the private schools on the government schools outside. Right now, it doesn't happen across the system. So let me bring Ramya in and then we move to the audience question. But before that, a clarification. I heard contradiction. In one sentence, you said completely outside department, some independent body which is not controlled in any way by the Department of Education, and then you said reporting to secretary. Which one? No, so again, reporting to secretary, because secretary also has a policy making power, right? So I was trying to dissociate the department from the like a secretary and the more policy making function. Yeah. But in an ideal situation, you keep it like completely separate, right? Yeah. Okay. And could it be then the SCPCRs? They are outside the Department of Education. Yeah. Ramya, go ahead. Yeah, no, see, I think also there is one role which is to run the board exam. And naturally, when you are a board, you are also setting syllabus and running the board exam. There is a second role which is to affiliate schools, maintain that affiliation, say that, okay, this affiliation works, doesn't work, etc. There is a third role which is the actual running of government schools. I think we are reasonably aligned that the third role, running of government schools, should be completely separate with the Department of Education. That is their primary function. Now when you see 1 and 2, the second role, that is affiliating or de-affiliating schools, this is a little bit questionable. So not all boards globally necessarily do this. So you could very well be a board that is saying, yes, you are free to take my exam if you want to apply for this exam, but you don't need to be affiliated only to me. And in fact, I also think it is in the spirit of the NEP to say, to question whether school affiliation to a board is necessary. Whether it is okay, for example, for a school to be affiliated to multiple boards, which on the private side is already happening. So can a school actually say, haan, theek hai, I will be affiliated to the state board, I'll be affiliated to CBSE, I'll be affiliated to some independent board, etc., etc. And the board is a completely independent
entity. But most importantly, the board, I think, has to be outside the department, and I would actually say outside the secretary's domain also, because even if the secretary has a policy making role, I think there is always a thing of showing कि our state is doing well in education, etc., etc. So the board, to me, it's like a high court in some sense, that it has to be completely outside the executive arm of the government in every way. Let me put you in the dock. Why have you designated Delhi Board of School Education as a triple SA for Delhi? No, by the way, I agree with that. That's what I'm saying. No, I don't think we have done that yet. Because the purpose of Delhi Board of School Education is like completely different. I mean, in the real sense, it has to develop as a board for learning assessment, not for regulatory. Like, take the example of Gujarat Secondary Education Board. Now, it is a very classic case. They do everything, including exam conduct. So, teacher training, recognition of the school, so everything. So we do not, and that is why it becomes so important, and we keep coming back to the legal question, is that unless you create, you are not going to kind of say take away its dadagiri, unless you have a law in place, because nobody is going to leave that all the power. more reason, for example, Delhi Board of School Education's executive chairperson is still the director of education. So while that board may have different form and functionality, the framework and the absolute blurring of distinction between the directorate and the board, the triple SA, if it were to be designated, the problem still there is there. No, it is true, and that is why we have to have a different authority. I mean, the regulatory authority should not be the one which is like deliberating also. So those have. But my question is that DBSC in its current scheme is not a regulatory body. So therefore, we have those two vested in the same authority. But the moment we will have that regulatory and deliberatory difference, we would ponder upon having that. Yes. Fair. Let's open it up for questions. Let's take 2 or 3 questions in the interest of time before the organizers start terrorizing us with the tyranny. Yes. बिल्कुल शॉर्ट में और संक्षिप्त में सवाल करेंगे. 1-2 पंक्ति या 3 पंक्ति में सवाल. हाँ. और शुरुआत करें अपने परिचय से. ये आपके ही हित में है, क्योंकि फिर खाना. Good morning, everyone. Well, discussion was very fruitful. My direct question to you, sir, is we are talking a lot about NEP. Does the NEP cover the academic curriculum? Because actually the aim of creating this NEP is to create such an academic framework for the children, which will actually help the teachers to deliver it nicely and children to grab it nicely. So does NEP talk about it? Because, you know, a child who gets admitted in class nursery and stays in a school till 12th class, 15 years of journey for 15 hours of studies, Fair. 15 hours of test, so those for 5 hours. Fair question. I think we'll take 3-4 questions and then distribute it amongst ourselves. Let's take one from the back, and we'll come to Dr. Nahar Singh then. Let's take one from the back. Yes, the gentleman, please. मेरा क्वेश्चन सैलन सर से है. सर क्वेश्चन ये है कि एक तो है कि शिक्षक विलिंगली कोई काम करना चाह रहा है, दूसरा है कि बाई फोर्स आप करवाना चाह रहे हैं. 2 अलग अलग चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है. एक ट्रांसफर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें खासकर नवोदय विद्यालय समिति में मैं देख रहा था कि एक लॉकिंग पीरियड 10 ईयर, आपको रहना ही है. आपके बच्चे कहीं रहते हैं, आप कहीं रहते हैं, आपको रहना ही है. क्या इसको और ह्यूमनिस्टिक नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि हम अपनी टेरिटरी में कहीं तो सर्व करते हैं, लेकिन वो अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होकर सर्विस करते हैं और टीचिंग करते हैं, लेकिन बाय हुक एंड क्रुक क्योंकि आपको रखना ही है. तो इसमें थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक नहीं होना चाहिए. How do we have transfer policies which are humanitarian as well as is reflective of long-term commitment? So how do we reconcile the two problems? Yes, Dr. Nahar Singh, and then we'll go at the back. You go ahead first now that you have माइक the दे mic. दीजिए प्लीज. Go ahead, sir. Go ahead now that you have the mic. इधर. Hello. Yeah. First of all, thank you for the insightful discussion. So my question is about the elementary stage of schooling. So NEP talks with a discussion on how elementary stage of schooling needs to be restructured in terms of infrastructure and in terms of building a high quality cadre of teachers for that stage.
But we already have a cadre of teachers in the form of Anganwadi workers who are present there, but there is no clarity on what will happen to those Anganwadi workers in terms of their roles and responsibilities, which is currently all over the place, and also in terms of their nature of work, which is usually in the policy document, it is being heralded as that they are voluntary workers who are coming out of the community. So how do we formalize the role of Anganwadi workers? How are we going to formalize it in the current So let's take scenario? one more question, then we take it amongst ourselves and then we wrap it up. Yes, Dr. Nahar Singh. मेरा प्रश्न थोड़ा सा दुविधा में है. मैं आपसे क्लियरिटी चाहता हूँ. आपने कहा कि क्योंकि SCRT पर आपने प्रश्न किया था तो थोड़ा सा सहन नहीं होता. जवाब देना भी बहुत जरूरी है. जवाब नहीं है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए. आपने कहा आपका सवाल है कि जवाब? नहीं, सवाल भी होगा, लेकिन उसका जवाब आप लोगों ने पहले दे दिया. SCRT को लेकर के बीइंग एकेडमिक अथॉरिटी के राइट टू एजुकेशन एक्ट में वो मिला. राइट टू एजुकेशन एक्ट SCRT ने तो तैयार नहीं किया था, भारत सरकार का था. और जो फंडामेंटल सर एक मिनट चाहूंगा मैं, सिर्फ एक मिनट सर. सवाल पूछ लीजिए. सवाल पूछ रहा हूं मैं. सिर्फ मैं ये कहता हूं कि अपना जब लोगों ने दूसरों के बाउंड्रीज को छुआ, प्रश्न वहीं से खड़े होते हैं. हम और ये जो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में SIE होता था, पूरे देश भर में होता था, और वो भारत सरकार के नियमों के अधीन था. प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, अब आपने जो है यहां पर राइट टू एजुकेशन एक्ट में अथॉरिटी तो बना दिया, लेकिन उसको एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया. अपना नियम बनाते हैं, अपना तोड़ते हैं. आप दुविधा में हमें क्यों डाल रहे हैं? आप हमें बता दीजिए हमें करना क्या है. मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है. फेयर क्वेश्चन आई थिंक. ठीक है. और उधर यस मैम, बस लास्ट क्वेश्चन. Good afternoon, panelists, and good afternoon, my dear friends. My question is, do you think we need to do revolutionary change in our education policy to meet up the global requirements? Fair. Thank So you. revolutionary changes in the new education policy to meet global requirement. About SCRT, somewhere there was a question. How do we formalize the role of Anganwadi workers? How do we reconcile transfer policy? And does NEP cover the academic framework? Would you like to take one each? Sure, go ahead, Ramya. मैंने जल्दी से easy question ले लिया. Does NEP cover academic framework? Yes, of course. I would suggest everyone to please read the document. It's very readable, and there is extensive literature in NEP, not only in the 66-page final summary, but in the 400-page draft, which is also readable. And the academic framework is extensively covered. However, the point I'll also make is, when you really look at the academic tenets of NEP, it's not fundamentally different from what NCF 2005 said or certain other policies said, as you know, Deputy CM was also saying in the morning. I think what is powerful, which if implemented well, is ultimately class में वो चीज़ होता है जो test होता है. So if we are able to make the change in the school leaving exams as envisaged by NEP, that's when the change in the academic framework will truly happen. Otherwise, those principles have been there for a long time, and it's there again in NEP also. Fair. Shailendra, would you? Let me start with the last question that you asked, revolutionizing. Now, पूरी NEP is a very revolutionary document. उसमें कोई दो राय नहीं है. What is it in it जो कि नहीं होना चाहिए, या फॉरवर्ड विजन नहीं है, या 21st सेंचुरी के हिसाब से हमको क्या नहीं करना चाहिए. All it covers almost all the aspects. The problem, the issue is how do we achieve that? कैसे हम उसको कर सकेंगे? So it's a revolutionary idea. What we are talking here about is the revolutionary actions to attain those ideas. तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, खाई है, उसको हम कैसे भरें. और उसको भरने के लिए जो, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, हमें तीन चीज़ चाहिए. बहुत सारे लोगों का बड़ा डिसएग्रीमेंट होता है NEP को ही लेकर के कुछ और. एंड आई हैव बीन लाइक, व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई से कि वी नीड टू गेट आउट ऑफ द सिमेंटिक्स.
there cannot be any single document in this country as vast and as diverse as ours which is going to satisfy everybody's last comma full stop need. हम अपने एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपने ही ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में, 3 लोगों के बीच में उस पर असहमति, डिसएग्रीमेंट रहता है. तो एक इतना बड़ा एक पॉलिसी बनी है, उसको 66 पेज में समेट करके कह पाना, कोई भी करेगा, हम होंगे उस जगह पे, आप होंगे, वो डिफरेंट उस पर रहेगा. द प्रॉब्लम इज कि जो बातें उसमें कही गई है उसको अगर हमें चरितार्थ करना है तो हमें करना क्या होगा. Definitely there is a strong planning which will be required on certain things. We will be requiring budget, and this is what we have seen in Delhi के केस में. दिल्ली के भी जो शिक्षा मॉडल की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप माइनस कर दो इसको कि 25% of the education budget of the total budget is not going to be allocated to education, तो हम कॉन्फ्रेंस और सेमिनार ही करवा रहे होते, वो चेंज नहीं होते. वो इस वजह से हो पाया कि द गवर्नमेंट ऑफ द डे पुट मनी ऑन द टेबल. हर चीज जो उसमें लिखी गई है, जो भी परिवर्तन करना है, इट विल कॉस्ट मनी. यू से गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट विल कॉस्ट मनी. आंगनवाड़ियों के बारे में ही जो आपने बात करी है, मैंने 4 तरीके के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम बनाए हुए हैं. एक आंगनवाड़ी का वर्कर है और वहीं पे एक नर्सरी टीचर ट्रेंड है जो कि उस चीज को कराएगा. दोनों की क्वालिटी में अंतर होगा और उसको अगर आप एक पैरिटी पे ले आओगे तो दिस विल रिक्वायर बजटरी सपोर्ट, दिस विल रिक्वायर कॉस्ट. एंड द थर्ड थिंग वुड बी कि जहां जहां पे आपको को लॉज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस, जो नाहर सिंह जी की बात है कि अब राइट टू एजुकेशन एक्ट ने तो एससीईआरटी को वो अथॉरिटी दे दी, बट अगर डीएसईआर इज व्हाट इट इज गाइडिंग द रनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, देयर वुड ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट. So the best way is to resolve those legally. तो तीनों ही फ्रंट पर काम करने की जरूरत है. आई एम नॉट सेइंग कि एक चीज कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा. हमें तीनों चीजें चाहिए. लॉ पे चूंकि बहुत कम चर्चा हुई है, इसलिए हम लोग उस चर्चा को आज प्रारंभ कर रहे हैं कि लेट अस लुक एट आवर ओन लॉ. जो टीचर की सर्विस कंडीशंस की बात है, सबसे बड़ा लिटिगेशन कहां पर होता है? किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ तो आप देखो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बिकम्स द बिगेस्ट लिटिगेंट. 2 जगह पे आपको एक टीचर के सर्विस कंडीशन में, प्रिंसिपल की सर्विस कंडीशन में, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, उनको ये हो गया, उस चीज को लेकर के लिटिगेशन आपको मिलेगा. या प्राइवेट स्कूल के रेगुलेशन में मिलेगा. वाई? बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग विद एन आर्काइक लॉ. So the law needs to be aligned keeping with the current realities. इतने नए कोर्सेज की, मल्टीडिसिप्लिनरी फलाना ढिमकाना की सब चीज की बात हो रही है. अगर इवेंचुअली रिक्रूटमेंट रूल में लिखा हुआ है कि साहब अगर आपने बीए में 3 साल हिंदी इलेक्टिव नहीं पढ़ा हुआ है तो हम आपको टीजीटी हिंदी नहीं बनने देंगे. आपने हिंदी की जगह कुछ और अगर लिख दिया कि सम क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी, खत्म बात, आप नहीं बन सकते टीजीटी. उस पर 2 साल जाइए, मुकदमा लड़के लेकर के आइए. So those things have to be changed in view of the changing needs and reality. इतने सारे नए यूनिवर्सिटीज कोर्स. अब ये डीटीयू की अगर हम बात करें, सपोज डीटीयू स्टार्ट्स सेवरल पाथ ब्रेकिंग कोर्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करके, बड़े सारे कोर्सेज में लेकर के, बट उस कोर्स को करने वाला व्यक्ति अगर एलिजिबल ही नहीं होगा टीचर बनने के लिए, प्रिंसिपल बनने के लिए, तो क्या करिएगा? So the best way is to align those so that we can get new talent, fresh ideas into the system rather than being beholden by the laws and policies which were created in 1970s or maybe before that. So that is the whole crux of the matter. 2 quick points, right? And this is also the closing points. One is the ma'am over there, the point about transformation. Transformation, again, most abused word and we all love the word. But I think sometimes you'll be amazed to see incremental change. Even 1% over a longish period of time is how transformation happens, especially in a sector like education. So because NEP is a once in a generation document, and let's keep a 30-40 year horizon to that and think of what are the incremental changes that we can make over the period of year, right? The second point, and someone raised the point about Anganwadi workers. I think the larger point is our budgets are fiscally constrained. So extra paisa dalna is really, really difficult, right? And one thing which again, as education walas, we all hate to say is value for money. How do we ensure that with maybe the same budget or little extra budget, we get maximum output? Anganwadi ka example dekh lijiye. There's some very interesting research happening from JPAL and others, which is also very intuitive. Having an extra Anganwadi worker which focuses on education, because Anganwadi workers have to focus on nutrition.
having an extra Anganwadi worker which focuses on education leads to disproportionate outcomes in Anganwadis. So can you think of like a creative ways in which like you move forward, right? So. I can totally imagine our teachers in spirit saying so. In Prussian war, the king was goading the general to attack or face dire consequences. जैसे हमारे circular होते हैं ना कि the non-compliance will be viewed very seriously. So the general was being goaded by the king repeatedly to attack, and the general says to the king that, my lord, you may do whatever you want to do with my head after the war is over, but during the war, can you please allow me to use it? So I think our teachers are essentially saying to us that let us use our brain, let us use our capacity. You put in place the enabling legal framework that allows us to use our brain and help our children better, not only professionally, but into a better human that they will all become. Thank you very much, everyone. Thank you. कुल मिला के इस चर्चा से हम ये समझ पाए कि पेचीदगियाँ बहुत सारी हैं और चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या जैसा शैलेंद्र सर ने इशारा किया कि प्लानिंग, बजटिंग और लीगल फ्रेमवर्क, इनके बीच का जो पूरा टसल है, डिसमैच है, डिसकनेक्ट है कई जगह, मिस क्वालिफिकेशन वर्सेस डिसक्वालिफिकेशन, तो इन सारी चीज़ों में जो जितने सारे आयाम निकल कर आए इस पूरी चर्चा के दौरान, उसमें हम देख रहे थे कि एक समझ तो ये बनी ही हमारी कि समस्या सुलझेगी तब जब हम समस्या को समझ पाएंगे। तो कुछ चीज़ों को हम समझ पाए इस पूरी चर्चा के द्वारा, और वही बात कि ये सारी बातें चाहे वो लीगल फ्रेमवर्क हो, चाहे बजट हो, प्लानिंग हो, सब बच्चे के लिए है। तो ये चीज़ें इतनी जटिल ना हो जाएं कि बच्चा हमारा पीछे रह जाए और हम इनमें ही खो जाएं। तो ये सब हम लोगों को मिलके देखना है। तो पूरे पैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इतनी बेहतरीन चर्चा के लिए। अपने रिस्पेक्टेड वीसी सर से आग्रह करूँगा कि आएँ और सारे पैनलिस्ट को हमारे एक रिस्पेक्ट स्वरूप कुछ अभी अब हम प्रोग्राम के बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने रजिस्ट्रार टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी श्री रजनीश सिंह जी को कि वे आएँ और समापन वक्तव्य देकर इस कॉन्फ्रेंस की सफल समाप्ति की घोषणा करें। So, first of all, I would like to say sorry because I am also in between you and your lunch. So, without taking much time, I will just do my duty. It's a very great day for all of us because two very fruitful panel discussion has taken place in this campus of Delhi Teachers University, and this is the first of its kind of a very good conference, and especially in these two panel discussions we have touched the teacher education as well as legal framework of this national education policy. So definitely it has begun a very good discussion about whether our laws, our institutes, our regulations are aligned with this national education policy or not, what are the legal loopholes which must be plugged into. So I think all the teacher educators, all the teachers, all the policy makers who are present here have got benefit out of this panel discussion, and it has enlightened us. Everyone has been enlightened by our expert panels. So on behalf of Delhi Teachers University, I would like to express my heartfelt gratitude to our Honorable Deputy CM who just inaugurated this conference. And he has given also words of wisdom which will definitely which will definitely give us a right direction to move ahead. After that, I would also like to express my sincere thanks to Sri Ashwad Bharatsar, who was the part of the drafting drafting committee of this national education policy. I would also like to express my gratitude to all the panelists, Professor Padma, Professor Dr. Ashwad ji, Ramya Venkataraman ji, Praveen ji, so all the panelists, Aditya Natarajan ji, so
all the panelists. Definitely, you people have spared your valuable time and shared your views with all our teacher educators and teachers. So definitely, it's going to be a very good thing, and especially it will give us a right direction where to proceed, how to proceed, and how to achieve this goal, how to implement this new education policy in the right spirit. So I'd like to thank all the panelists for this panel discussion, and all the organizers, all the people who have worked behind this conference to make it a grand success. So let us have lunch together. Thank you so much. Bye-bye. So thank you so much for the closing address. The deep delving, path-breaking and spearheading discussion of questions have really set us thinking about the untouched areas. May we all rise for the national anthem. उज्ज्वल जलधि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you so much. We can all proceed for lunch now. Have a great day.